आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष परिसंवाद अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय साहित्य विषय पर आप सभी आमंत्रित हैं और आप सबका मैं साहित्य अकादमी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित वक्तागण हैं असमिया भाषा से ध्रुवज्योति गोरा जी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा से हरीश त्रिवेदी जी, गुजराती भाषा से हर्षद त्रिवेदी जी, हिंदी भाषा से रामजन्म शर्मा जी, कन्नड़ भाषा से राघवेंद्र पाटिल जी, मलयालम भाषा से प्रभा वर्मा जी, उड़िया से चित्रंजन पुरी जी, पंजाबी से गुरदेव सिंह सिद्धू जी, तमिल से पी आनंद कुमार जी, तेलुगु भाषा से वासीरेड्डी नवीन जी और उर्दू से रक्षणदास जी जो थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। हरीश त्रिवेदी जी ऑनलाइन हमसे कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी आमंत्रित अतिथियों और आप सभी प्रतिष्ठित श्रोताओं का अकादमी की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं औपचारिक स्वागत के लिए साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे शब्दों से आप सबका स्वागत करें। उससे पहले मैं अपने अतिथियों को अकादमी की परंपरा के अनुसार अंग वस्त्रम देकर के उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ। I'm glad to welcome all of you for this symposium on Indian literature banned by the Britishers. Proscription of any kind or by anyone, be it family or a community or society or government, is an act of defensiveness. It may be an act of precaution or an emotional trigger by fear or simply a knee-jerk reaction abated by fargo that is essentially out of proportion. Whatever the foundation is, all proscriptions are found to be unwarranted and quite unnecessary over a period of time. In fact, all proscriptions tend to have a counter effect or a series of counter results in time. This is not something that is limited to one civilization or society, but across the world. Also,
This is not something that is the invention of some modern minds as it is being made out in some quarters. Well, bands are as old as first human settlements. As social networks became more complicated and life became busy over centuries, bands of various types, based on color of the skin or religion or some generally agreed moral or legal code or simply the expression of outlandish ideas, they have always occupied human communities and nations. That may well be the story or truth, but why are bands of all kinds bad, bearing acts that are harmful to individuals and communities collectively at all times? That is a question. Bands of ideas, books and actions tend to stall the pace of growth of individuals and societies, and progress becomes nothing more real than a mirage. How true is this can be seen from the annals of history of every civilization, and over the past 2000 years at least. How difficult is it for people to see this in the 21st century is where the problem lies. That analysis is for another program and another date. Coming to the topic of the symposium, that Britishers banned various types of literary creations is something that will not be disputed. My opinion is that Britishers underestimated the power of pens in the hands of Indians. Well, they knew about American Revolution of 1775, French Revolution of 1789, and the impact that the writings of Mars were creating in Europe were all well known to the British Raj. They underestimated the ability of Indians, especially Mahatma Gandhi, to use pen as a political tool, and more so the ability of the written word to travel across such a big country, especially at a time when much of the country was illiterate. When their situation became desperate reason, something for which they became known for worldwide, deserted them, and in a series of knee-jerk reactions, they started banning literary creations including songs that were sung and plays that were enacted left, right and center. Literary creations in Bengali, Hindi, Urdu, Kannada, Punjabi, Sindhi, Telugu, Gujarati and Tamil, to name a few, were banned, including Hind Swaraj and Sarvodaya by Mahatma Gandhi, Jallianwala and 1857 by Manubhai Pancholi Darshak, Sindhu Do by Jhaverchand Meghani, Veerini Hakan, speeches by Sardar Patel, poems of Sitaramanyaneyulu and Kashi Vishwanath Shastri among a host of literary creations in all the Indian languages. What happened as a result of these bans? They galvanized the masses and united the communities into one potent force, and that led to the demise of the British Raj. The topic is vast and the number of languages in which these bans took place are vast. I just wanted to point out the opposite effect which the bans tend to have, and especially in the context of banning of literary creations by the British Raj. I am thankful to all the scholars who are here today, and with these few words, I am glad to welcome all of you once again. Thank you all. डॉक्टर के श्रीवास्तव जी ने बताया कि साहित्य विचार और साहित्यिक कृतियों को, साहित्यिक कार्यों को प्रतिबंधित करने के कितने कारण रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि ये लेखकों की कलम की ताकत ही थी जिससे जो सत्ता पक्ष था, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो कितना घबरा गई थी। यानी एक कलम की ताकत को भी हम रेखांकित करते हैं इस बात से। और ये ऐसा साहित्य था जिसने लोगों को एकजुट करने में, अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुँचाने में बड़ा योगदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर के श्रीवास्तव जी के प्रति। मित्रों, अब हम अपने वक्ताओं की तरफ चलते हैं। असमिया भाषा के श्री ध्रुवज्योति बोरा जी हमारे बीच में हैं। आप असमिया भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, इतिहासकार, निबंधकार, चित्रकार, बुद्धिजीवी और समाज वैज्ञानिक हैं।
आपकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं कथा रत्नाकर, तेजोर अंधार, अर्थ, लोहा, कलांतरार, गद्य आदि। आप प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से स्तंभ लेखन करते हैं। आपकी रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद किया गया है। आपको अंबिका गिरी राय चौधरी पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मानों से अलंकृत किया गया है। अभी आप फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बरपेटा के प्रधानाचार्य हैं तथा साहित्य अकादमी के असमिया परामर्श मंडल के सम्मानित संयोजक हैं। बहुत ही आदर के साथ श्री ध्रुव ज्योति गौरव जी। Namaskar. In fact, I consider that this particular topic that we are going to discuss today is of immense importance in our history of development as a people, as a nation, and our history of struggle against the imperial powers of British. This has forced, maybe within the ambit of each individual language, a rare sense of unity in our country, and since the literatures that were banned were essentially anti-British, anti-imperialistic and patriotic, nationalistic and freedom-loving, they united the whole nation by their themes and by their contents. So though each Indian language has different stories in this, different histories in this banning operation by the British, but essentially the essence of the whole thing was same, and it helped to weld the nation in its struggle against imperialism. Now this anti-imperialistic literature that was essentially banned by the British was a literature of protest as well as literature of revolt and freedom. The eternal yearning of a people for freedom, the universal quest to be free, of throwing off foreign dominion, is expressed through such literature. Such literature also speaks of resurrection, of redemption from the abyss of slavery and subjugation, and speaks of rebirth of a people. In modern times, it is the rebirth of a people into a modern nation or a nation state into which we are trying still at 75 years of our free history to value, to give shape to. Why do we need this? We need it to enjoy our own just historical rights as a member of free assembly of nations. See, India has been subjugated, I would say, twice. First by the invaders that came from the north and west, the Turks, Afghans, Mughals and Marid people who came with a different religion, the religion of Islam in the Middle Ages, and permanently changed the ethnographic, cultural and religious practices of this ancient land. Whether it was for good or bad, one can definitely say. But what I can say is Assam was last to come under all of this.
these changes, both under Mughal rule and British. Mughal rule was confined to only a small western part of Assam, and for 17 times we drove back the Mughal invaders. Muslim influence thus was at its minimum. It came only in the colonial rule. During the colonial rule, we colonially approved migration from East Bengal. I reflect that this less influence, this absence of Muslim rule was a real blessing in case of Assam and its literature. The second wave was, of course, the colonial invasion. Assam was colonized first by Burma, which very few people know, which colonized Assam for 3 years from 1823 to 1826. Then the British took over the whole land by the Treaty of Yandabu after the Anglo-Burmese War in 1826, and Assam thus came under British rule. But from the very beginning of the British rules, revolt started brewing in Assam. First, it was the aristocracy which led the banner of revolt. Then slowly, more common people, local level leaders also took part. Revolt by Gamadhar Kumar, he was a prince, Prince Gamadhar Kumar, purely who was a high-ranking official, started first. And the surrounding hill tribes also revolted one after another. While the Britishers tried to subjugate the hill tribes, which in medieval Assam had a very friendly relationship. Of course, there were small conflicts, but friendly relationship with the Assamese people and the Assamese kingdoms. When the British tried to subjugate them, there were a series of peoples. The Khamti, Shinko, Naga, and all other tribes, one after the other, revolted against the British. In 1857, there was a revolt by the Moninam Dewan, and he was hanged for his revolutionary activities when he wanted to throw off the rule of the company that was established in Assam. He and his compatriot, Rioli Borua, and a lot of others were caught, who were hanged, and many of them were transported to the cellular jail in Andamans. When the freedom struggle started, Protestant freedom struggle agitation started from the days of non-cooperation movement, followed by civil disobedience and the Quit India movement. And literature was produced during this period. One of the salient features of literature of this period was that it was essentially oral literature of songs, drama enactments, ballads, which we call malitas, written literature of protest or written anti-British literature came later. But the oral literature was the first to start, and it is still extant, is still available till these times, and I would like to assure you that it is beautiful and very stimulating literature was produced in those days. If we classify the written literature, we see three types: nationalistic literature, anti-imperialistic literature, and progressive, radical or revolutionary literature. I will recount only a few examples
of nationalistic and revolutionary literature that was banned. The British took recourse to Indian Press Emergency Power Act, Section 19, which put the provision of banning on the media and the press. One of the most significant booklets banned in 1937 was called Vidrohi Bharat. It was written by veteran Congress leader and freedom fighter Vijay Chandra Bhagwati. Examination of this pamphlet-type book reveals a very thorough survey of the imperialistic British rule, the ill effects of colonialism, and the emerging parameters of people's struggle led by the leaders of Indian National Congress. The current policies, specifically the imperialistic war, the First and the Second World War, were criticized, along with the Congress viewpoint regarding the wars were dealt with. It was lucidly written, illuminating book. The British government banned this book in 1937. Another very important book was a poetry book written by one Sudha Dev. Nothing is known about this particular poet at the present time, except that he was a Bengali who lived in Assam. His songs were very powerful, lyrical, and imbued with patriotism and nationalist fervor. Nothing much is known about the poet, but his songs still live on. The book was banned even before in 1929. Lots of small revolutionary and radical pamphlets that were published in that period was banned because in each district the district commissioners had the power of banning, and they banned whatever was put before them as something anti-British. Left, radical and communist literature which severely criticized British imperialistic and colonial policies and advocated armed struggle and revolution were banned in Assam. Some books published elsewhere were also banned in Assam. Notable among them was communist leader Zio Hikari's The Second Imperialistic War, which was banned in 1939. Similarly, the mouthpiece of the Communist Party, Red Flag or Lal Nisan, was banned. Many pamphlets published for Bengal and Bihar, which were distributed in Assam, were also banned. Even chapter of Pratibha Deli's novel, Notun Diner Alo, The Light of a New Day, was proscribed by the British. So several chapters were banned. By banning these books, pamphlets, and other colonial and other writings, the colonial British tried to gag the Indian people, tried to contain the spread of revolutionary ideas, tried to suppress the messages for change, and tried to suppress patriotism, tried to stunt nationalist fervor, and deny the people the freedom of speech. So these bannings, which I have given the main examples, because pamphlet banning was so common and pamphlet production was so high in numbers, maybe 100 copies were printed, maybe 200 copies were printed. Even handwritten ones were also banned, which were circulated in a handwritten way. All these served only one purpose. It stimulated the people to greater struggle. When they felt that their voice, their yearnings sought to be banned by the Britishers, the foreign powers, they became more resolute in their struggle
and they took part in greater numbers in the various events of the independence struggle. With this small note regarding the Assamese experience of imperialistic banning, I would like to conclude my best wishes and my respect to all the writers who have assembled here from all over India and from whom we wish and we expect to hear the experience of the Indian people through different languages. My thanks to Rao, who has made this gathering, important gathering, possible today. With this word, again wishing you a very best of the Independence Day. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज्योति गोराई। एक पूरा इतिहास आपने बताया असमिया साहित्य का और उसमें बताया कि किस तरीके से साहित्य को क्या ऐसी अराजकता थी कि कुछ भी पम्फलेट भी छपता था उसमें थोड़ा भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता था तो बैन कर दिया जाता था। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ ज्योति गोराई जी के प्रति। मित्रों, हमारे बीच में प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। हम साहित्य अकादमी की ओर से हरीश त्रिवेदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में हरीश त्रिवेदी जी का आपसे परिचय करवा देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के आप पूर्व प्रोफेसर तथा शिकागो और लंदन विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। आप कोलोनियल ट्रांजैक्शंस, इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया के लेखक हैं तथा इंटरोगेटिंग पोस्ट कोलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड तथा किपलिंग इन इंडिया, इंडिया इन किपलिंग के सह संपादक हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड एसेज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी शीर्षक से एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, जिसका संपादन रूथ वनिता ने, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवा, सुशांत बासनेट, डेविड डमरोश तथा रॉबर्ट जेसियन द्वारा किया गया है। उनके योगदानों को सहित किया है। आप लिटरेचर वर्ल्ड हिस्ट्री के संपादक हैं, जिसका प्रकाशन जून 2022 में विली ब्लैकवेल न्यूयॉर्क द्वारा 4 खंडों में किया जाना था। मैं बहुत ही आदर के साथ हरीश त्रिवेदी जी का साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य हमसे साझा। आदरणीय प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी। Thank you very much, Kumar Anupamji, Dr. Srinivas Rao, distinguished fellow participants, and others present at this gathering. I'm very sorry that I cannot participate in person. There was some kind of confusion, misunderstanding perhaps. I agreed to come today when I was phoned, but then the very next day I realized that I had something else which prevented me. And I sent an email, but somehow the phone prevailed over the email and I find my name in the card. So I thought, rather than not turn the call, I'll come and join at least virtually. I've been asked to speak in English because I represent English, but I've taught all my life English literature. But I must say that over the years I've moved more and more towards my own mother tongue, Hindi. I write more in it now, I publish more in it. But I'll speak at this meeting about English. The subject that has been given to us today to speak on, literature banned by the British in India, is an extremely important subject because it represents, it indicates immediately how oppressive British rule was in India. One did not have to do anything, one just had to say something, or just write something. But the mighty power of the British rule to track down. Extremely punitive measures were taken. So the subject is most welcome. In fact, I'd suggest that as the Sahitya Academy does, it has resources, it has outreach, it has people
experts in all the languages and literatures of India. Perhaps an anthology could be brought out of some of the major works or extracts from them banned by the British in the many languages of India. Only this morning has reminded that on the 60th anniversary of Indian independence in 2007, 15 years ago, I happened to be in Britain. I was invited by two British universities to lecture on India after independence at Edinburgh and Warwick. But in London, I found something extremely interesting at the British Library. The British Library had put on a special exhibition to mark the 60th anniversary of Indian independence. And what was the theme of that exhibition? It was literature banned by the British in India. The same subject as ours. And I was, on the one hand, thrilled to see that exhibition. The biggest collection of books and periodicals banned by the British in India is at the British Library. Because they incorporate now so-called India Office Records in Library, which was the government wing which collected everything published in India, including the publications banned in India. Some of those may be difficult to find in India, but they're all nicely preserved there in London. And I wondered whether the British government was being ironical by displaying, the British Library was being ironical in displaying those items, or were they being repentant? One never found out. Our own attitude to what they did is very clear. We are still indignant. We are still angry to some extent that the British did this to us. I was trying to think this morning of a couple of books in English that were banned by the British, that were written in English. And the first name that came to my mind was British in India by Pandit Sundarlal, 1929. And another book that came to my mind was published in 1909 by Vinayak Damodar Savarkar, India's Fight for Freedom, 1857. But as soon as I began collecting my thoughts about those books, and they were both banned, they were published in English, they were banned, I found out that neither of these books, and shows how ignorant I was about it, neither of these books was originally written in English. Savarkar's book was written in Marathi, and Pandit Sundarlal's book was written in Hindi. And those editions were banned as well, and the translations into English were banned. In fact, Savarkar's book was banned even before it could be published in the original Marathi. And Pandit Sundarlal's book was banned 4 days after it was published, and within that 4-day period, it had sold 1,700 copies. Now, the point to note here is that there were very few publications in English that were banned by the British. The British taught us English to be loyal to them. They did not expect the elite who were English educated to be disloyal and to publish what they call seditious material. They expected the vernaculars, the Indian language writers, to do that all the time, but not those who wrote in English. And by and large, they were correct. This is about books. About periodicals, their policy was even more severe. About periodicals, what they did was, in the first act that they passed to regulate publication of periodicals in India was in 1879, the Press Regulation Act in 1879. And since then they passed stricter and stricter bills, acts to control the press in India. And gradually a policy evolved in which periodicals in India were divided but then into 3 categories. The first category was periodicals which were owned by the British and edited by the British in India. The most prominent example of this was the Pioneer newspaper of Allahabad. It was so loyal to the British that some viceroys even were not as loyal. It used to rebuke viceroys whenever the paper thought that they were being not strong enough or strict enough with Indians. That's how loyal it was.
The second category that they had, the British, in the press act, was publications in English owned by Indians and edited by Indians. Those were the middle category. Papers like the Tribune started in the 1890s in Lahore, the Leader in Allahabad started in the 1920s, I think, by C.Y. Chintamani, and the National Herald started in Lucknow with full backing with Jawaharlal Nehru in the 1930s. Nationalist newspapers. They sometimes ran into trouble, but not as much as the third category. The third category was what they call the vernacular immigrants, press in the Indian languages, and these were very carefully monitored and watched. And they came in for the most severe punishment of all. Lokmanya Tilak was banished out of India for 6 years for 2 articles he published in Kesari, a periodical in Marathi. Gandhiji in 1922 was jailed. Banning is one thing. Jailing people for writing something is another, and both those steps were taken by the British. It's like banning the author, sending him to jail. Gandhiji was, in 1922, he was arrested and jailed for the first time after returning to India. And what was his offense? Not that he had led the non-cooperation movement for 2 years. Not that he was allegedly behind the violence in Chori Chora, which he was not. No. That he had written 2 articles. That's why he was jailed. That was the ostensible charge. So these 3 categories of periodicals were treated differently by the British, and the most heavy-handed treatment was meted out to periodicals in the vernacular languages. I will give one example of a novel in English that was actually, the British tried to stop it from publication because they found it was seditious. But before that, let me name some of the great writers in English and see what kind of treatment they got. R.K. Narayan, for example, the greatest name for so many people in Indian writing in English, even now. In his very first book, Swami and Friends, there is a scene in which little boy Swami, he's only 11 or 12 at that time, in the novel. He and his friends decide, as a friendly prank, as a mark of protest against British rule, that if all of them in Malgudi, the town of Malgudi near Mysore, if all of them got together on a certain day at a certain time, and all of them faced towards England from Mysore and spat on England, then the collective spit of Malgudi town will be enough to drown the small island of England. Just spitting on it. अरे उस पर थूक तो डूब जाएगा समुद्र में. That's the sentiment that R.K. Narayan expressed, and no action was taken against him. In 1938, Raja Rao wrote one of the most amazing Gandhian novels ever written in any language. I've written about 20 of them. I've written a history of Indian literature recently, so I read about 20 Gandhian novels. Rangabhumi by Picton is, I think, the novelist. But Kantapura by Raja Rao is not far from it. And again, it's all about Gandhian movement and the small Karnataka village. How it spreads, the effect it has, how it's suppressed. No action was taken. The novel against which some action was likely to be taken was by Ahmad Ali. It's called Twilight in Delhi. It was published in 1940 or 41 in England. Ahmad Ali had gone to England by then. After having got to Lucknow and Allahabad, he had gone there with his mom to get it published there. And the British have a very funny law, implemented in India and England both, that if a seditious book is published, the author is responsible, the publisher is equally responsible, and even the printer is responsible. So when this book was being composed, the compositors at the printing press came to a scene which they thought was seditious. Remember, there was a world war going on, so the atmosphere was different. And what was this passage? It concerns Lal Killa, which has somehow become a symbol of our gaining independence.
The Prime Minister climbs up the ramparts every Independence Day in speech from there. Always has the Westminster House out there. What is happening with the Lal Killa is, this is December 1911 or 1910. King George V of England is in India, the only British sovereign ever to visit India before independence. And he is marching into Lal Killa. And there are the elite, the Muslim elite of Chandni Chowk gathered there to watch. And they all feel extremely anguished that the Lal Killa, which was the symbol of the power of the Mughals, is now visibly going to be seen to be marched into and occupied and ruled by a British king. So they do not say anything, they cannot say anything, but their sentiments are expressed indirectly by Amrit. And this was the scene that the printers found seditious and refused to compose. They just stopped composing the book at that point. They said, no, we will not print it, we will not publish it. But there was a man called Ian Foster, British novelist, who was मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। हरीश जी ने बहुत ही रोचक तरीके से और पूरी जानकारी से भरी अपनी बातचीत की। उन्होंने जिक्र किया दामोदर सावरकर का, उनकी किताब का जो बैन की गई थी। उनकी दो किताबें और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर शीर्षक से प्रकाशित हुई थी और एक दूसरी किताब 1909 में ये प्रकाशित हुई, इंडियन वार ऑफ 1857, 451 पृष्ठों की किताब। और ये किताब इतनी चर्चित थी, लंदन में छपी, और इस किताब से इतना प्रभावित हुए भगत सिंह, उन्होंने पंजाबी में इसका अनुवाद करवाया और बाकायदा पंजाब से प्रकाशित भी किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले सिद्धू जी से बात कर रहा था। और ये किताब कई भाषाओं में अनुवाद होकर के मराठी में, असमिया में, कई भाषाओं में छपी हुई। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ हरीश त्रिवेदी जी के प्रति। मैं अब अगले वक्ता की ओर चलता हूँ, श्री हर्षद त्रिवेदी जी के पास। आप प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, आलोचक और संपादक हैं। आपने गुजराती, हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधियाँ प्राप्त की। आप गुजरात साहित्य अकादमी में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। आप शब्द सृष्टि गुजराती साहित्यिक पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। विगत 30 वर्षों से साहित्यिक रचना करने में आप सक्रिय हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के गुजराती भाषा परामर्श मंडल के आप सदस्य रह चुके हैं। आपके प्रकाशनों में 6 कविता संग्रह, 1 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 1 संस्मरण रेखाचित्र, 1 निबंध संग्रह, 1 बाल साहित्य की कृति, 2 साहित्यिक समालोचनात्मक कृति शामिल है तथा आपने 3 पत्रिकाओं और 22 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है। आपको जयंत पाठक कविता पुरस्कार, कविश्वर दलपत राम पुरस्कार तथा कुमार चंद्र जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय हर्षद त्रिवेदी। आदरणीय ध्रुवज्योति बोरा जी, श्रीनिवास राव साहब और भारत की विभिन्न भाषाओं के जो विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपनी बात रखने वाले हैं, सब श्रोताजनों और साहित्य अकादमी के जो कार्यकर्ताओं हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित गुजराती साहित्य, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली, उससे पूर्व का सच्चा इतिहास जानना अभी बाकी है। इस स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी है। कई नवनिहाल फांसी के तख्ते पर लटक गए,
तो कईयों को तोप के मुहाने पर बांधकर बारूद से उड़ा दिया गया। बेहिसाब लोगों ने शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं झेल कर भी हार नहीं मानी। कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में होना और उसमें भी युवा होना जीवन का अनमोल अवसर हुआ करता था। मातृभूमि के लिए असंख्य लोग जेलों में सड़ कर मरे हैं। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। निसंदेह उसमें पुरुषों की संख्या अधिक थी। केवल गुजरात की बात करें तो 1857 से 1946 के दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राण दिए। हम तो सिर्फ गिने चुने महत्वपूर्ण नाम ही जानते हैं। आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद हमारे पास आज़ादी का क्रमबद्ध और प्रामाणिक इतिहास नहीं है। वास्तव में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सेदारी की है, वे सारे नाम बड़े सत्यपूर्ण शोध एवं अध्ययन का विषय है। वैसे तथ्यों और दस्तावेजों के आधार काफी कुछ मिल सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों से समय समय पर इन आधारों का तो नाश किया गया है। उन्हें कैसे पाया जाए? इस अर्थ में आज़ादी का इतिहास अधूरा ही रहेगा। 1857 से 57 के संग्राम में अंदाजन 3 लाख देशवासियों ने प्राणों की बलि दी थी। जो लोग मारे गए वे आम आदमी थे। वे किसी एक कौम के नहीं थे। उनमें प्रायः सारी जातियों के प्रतिनिधि थे। यह आंदोलन नेताओं प्रेरित था, उससे अधिक तो स्वयं था। उस समय हमारी गुजराती भाषा के कवियों, लेखकों, पत्रकारों आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे लोग भी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में शामिल हुए थे। इन कलम धर्मियों का उद्देश्य था कि मातृभूमि के लिए जान की बाजी लगाकर भी स्वराज के लिए लड़ने वालों का आत्मबल टिकाए रखें और उस माहौल को बनाए रखें। और ऐसा करने पर गिरफ्तारी हो या जेल उन्हें मंजूर था। सिर्फ साहित्यकार ही क्यों, प्रजा ने भी अपने ढंग से लोक लय में लोकगीत, गरबा, रास और शौर्य गीत की रचनाएं की थी। प्रचलित लोकगीत है वो उसमें नए नए अंतरे लोगों ने जोड़ दिए थे। जैसे कि ओखा मंडल क्षेत्र के वाघेर, एक जाति का नाम है वाघेर, तो ओखा मंडल क्षेत्र के वाघेर लोग और माने उन्होंने तो 1857 से भी 57 से पहले अपने ढंग से आग भड़का दी थी। मुड़ू मानिक के विषय में लिखे गए रास ना छड़िया हथियार लाला बेली मरने जो हेकड़ी बार, तो शायद आपने सुना होगा। ना छड़िया हथियार लाला बेली मरने जो हेकड़ी बार, के उबा के तो मुड़ुभा बंकड़ा ना छड़िया हथियार। तो आज भी लोक साहित्य के दायरा यानी कि महफिलों में जोश भर देता है। दरअसल यह एक मरसिया है, शोक गीत है, जो कि उसमें पराक्रम और मृत्यु की महिमा है। यह गुजराती बोली की ताकत है। इसके पद्य की गति और जोश के कारण यह हमें रास और नृत्य का गीत भी लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके पूर्व सूरत शहर के कवि हरिलाल ने मगदल्ला की मर्दानी का लिखा था। इसमें सूरत की मल्लाह मछुआरन जो होती है, वो स्त्रियां, उसकी बहादुरी का वर्णन है। कैसा है ये? सूरत शहर में सोल्जर लोकनो लश्कर आगमती भारे, गुरानी मोकानो संभળાથી 8 चौटा में बजारे, उधना दरवाजे केर करीने झाली गई सुंदर नार रे, विषय ना पुतरा कपड़ा पर करता बहु अत्याचार रे, महिधर परानी वणिक ललना सविता सुंदर सारजी, सोल्जरो उचकी गया कौन सुने पुकार जी, बाजार में एक भरती सुंदरी उचकी जता निर्धार जी, सौंदर्य ऊंची करता काचा मांस आहार जी, मानव पिशाच ने मेहर नहीं जननी ये भूमि भारे करी। हालांकि यहाँ खूब लड़ी मर्दानी में जो काव्यात्मकता है वह यहाँ नहीं है, परंतु स्त्री समूह की जो करुणता और व्यथा सटीक रूप से व्यक्त हुई है। 1857 में अहमदाबाद, पंचमहाल, महीतट इत्यादि जगहों पर अंग्रेजों के साथ स्थानीय प्रजा ने संघर्ष किया था। उस समय अंग्रेजों को नाकों चना चबाना पड़ा था। मुंबई से ब्रिटिश एजेंट का ऐसा आदेश आया कि इन लोगों को जेल में डालकर फिर मुकदमा चलाने का समय नहीं है, उन्हें सीधे तोप से उड़ा दो। इसके सामने कवि जीवनलाल भट्ट ने लिखा, कदी नथी हार हूँ हवे नथी हार हूँ, भले जान मार जाए कदी नथी हार हूँ,
कैद आवे, फांसी आवे, तोप ने तलवार आवे, बॉम्ब ने बंदूक आवे, तोय नथी हारવું, जीवीने स्वराज लेशु, मरशु तो मुक्ति ने वर्षु, गुलामी ना वेशु। ये गौरतलब है कि 1857 से 1946 तक चली इस क्रांति को कई स्वर मिले हैं। स्वाभाविक है कि ये सब कई इस जुझारू प्रवृत्ति के लंबे दौर के विभिन्न तबके के प्रति भी ऐसे कर्तव्य स्वर है। दलपतराम और नानालाल तो अंग्रेजी राज और रानी विक्टोरिया के गुण गाते हैं। उन्हें चूंकि अंग्रेजों के आक्रमण से पूर्व देशी रियासतों की अंधाधुंध अराजकता और मध्ययुगीन मानसिकता का पूरा परिचय था, अतः अंग्रेजों की तालीम और व्यवस्था शक्ति से प्रभावित थे। विशेषतः दलपतराम तो प्रायः भक्त भी थे। फार्गस के अवसान के बाद अपने जो फार्गस विरह नामक काव्य लिखा, वह दलपतराम का ही नहीं, गुजराती भाषा का प्रथम करुण प्रशस्ति काव्य है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलिजी बोलते हैं। उसका परिचय दलपतराम को तो पहले नहीं था। गुजरात में जब फार्गस या फार्गस साहब नाम से प्रचलित किए, यानी अलेक्जेंडर किंग ऑफ फार्गस गुजरात के मित्र ही नहीं परम मित्र थे, सखा थे। उसने दलपतराम के अंग्रेज प्रेम के मूल में फार्गस का साहित्य, इतिहास, कला और संस्कृति के प्रति लगाव था। ये जो है ये अंग्रेज अधिकारी एक ऐसा था जिन्होंने गुजरात की पूरी संस्कृति, भाषा, साहित्य सबका उद्धार किया था। एक और कवि है त्रिभुवन गौरीशंकर व्यास। आपने बड़ी छोटी उम्र में शिक्षक के रूप में काम शुरू कर दिया था। स्वतंत्र आंदोलन के कारण नौकरी छोड़ दी थी। बे देश गीतों और नवी गर्भावली आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नवी गर्भावली में वनराजनु हालरडू और गौरतलब होती है। आपका अत्यंत ख्यात काव्य नहीं नमशे वो मार्चिंग सॉन्ग कूच गीत की तरह गुजरात के तमाम विद्यालयों, संस्थाओं और प्रजाजनों में बड़े उत्साह से गाया जाता था। नहीं नमशे निशान भूमि भारतनी एक धर्म ध्वजानु साचो शू सन्मान निशान भूमि भारतनु एक तणो ए अमर पटो छे मुक्तिनु वरदान निशान भूमि भारतनु। इस दौर के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जो राव साहब ने जिक्र किया, झवेरचंद मेघानी। आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर के बिरुद से नवाजा था। मेघानी भारतीय कवि, लेखक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1930 में उनका काव्य संग्रह सिंधुडो प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण ही हजारों प्रतियां बिक गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सिंधुडो को जब्त प्रतिबंधित किया। सत्याग्रहियों ने पीड़ा उठाया। भावनगर शहर के एक मकान के तहखाने में रतुभाई अदानी के हस्ताक्षर में मूल प्रति की नकल साइक्लोस्टाइल करके रण मैदान में तथा स्थान पर बांटी गई। यह थी मेघानी की ताकत। इन काव्यों को लिखने के जुर्म में मेघानी को 2 साल के लिए जेल की सजा हुई। इन रचनाओं में स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय युवकों को प्रेरणा देने वाले गीत थे। इसी दौरान आपने गोलमेजी परिषद के लिए लंदन जाने वाले गांधी जी संबोधित काव्य छिल्लो पटो लिखा था। स्वातंत्र्य भावना गुजराती उपन्यास से अधिक तीव्रता से गुजराती कविता में अभिव्यक्त हुई है। गांधी युग का शायद ही कोई कवि ऐसा होगा जिसने स्वतंत्रता आंदोलन अथवा गांधी जी को लेकर एक भी कविता न लिखी हो। 1930 से लेकर के 1950 के दौर में इस प्रकार की ढेरों कविताएं गुजराती भाषा में लिखी गई। हालांकि इन रचनाओं पर ब्रिटिश सरकार ने कानूनी तौर पर कोई प्रतिबंध लादा नहीं था। इस युग की तमाम रचनाओं में से जिनकी कविताएं आज तक टिकी हुई है वह है झवेरचंद मेघानी की। आपका युग वंदना काव्य संग्रह 1935 में प्रकाशित हुआ था। आखिरी संदेश, कोईनो लाडकवायो और छेल्ली प्रार्थना, ये 3 काव्य एक ही साल में लिखे गए थे। इनके अलावा धरती मागे से भोग, दिक कोनी मात ने मृत्युનો ગર્ભ, મોતના કંકુકોણ, विदाई, शौरवतीना विलाप, सुना सरोवरनी पारे और स्वतंत्रता की मिठास जैसे आज तक लोक हृदय में बसे मेघानी के काव्य सिंधुडो संग्रह में प्रकाशित हुए। सिंधुडो की कुछ पंक्तियां। सारा नाम मां वो स्वतंत्रता, मीठी आशी वत्सलता भरी, मुर्दा मसाणे थी जागता, शब्द मां श्री सुधा भरी, पूछी जो कोई गुलाम ने, उठा केवा ओग एने मने, मળી મુક્તિ મંગલ જે દિને, એને કાને શબ્દ પડ્યો તું સ્વાધીન, શી ઓગો સુખની ઘડી, એની આંખ લાલમ લાલ, છાતીમાં છોડો છલકાઈ પડી, તારા નામમાં ઓ સ્વતંત્રતા।
स्वाधीन। तो दूसरा गीत है, आगे कदम आगे कदम आगे कदम यारो फनाना पंथ पर आगे कदम पाछा जवार रस्तो नथी रोकाओ ना धक्का पड़े से पीठ थी रोता नहीं गाता गुलाबी तौर थी आगे कदम आगे कदम। ब्रिटिश सरकार ने एक ही दिन में 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी थी। इस घटना से द्रवित होकर मेघानी लिखते हैं, वीरा मारा पंच सिंधु ने शमशान रोपाना तरण रूपड़ा बोजी वीरा एनी डाळियों अड़ी आसमान मुक्ति ना जरे फूलड़ा बोजी वीरा तारा फूल रे सरीकना शरीर ईंधन तोय ओछा पड़या बोजी वीरा मारा सतलज नदी ने तीर पिंजर पूरा न पड़या बोजी। इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। बंधु रे पंच नदियों के शमशान में 3 वृक्ष बोए थे। बंधु उसकी डालियां छू रही आसमान को, उस पर से मुक्ति फूल झर रहे हैं। मीरा के यह अमृत फल लगे, मीरा को तो ये अमृत फल लगे थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मातृभूमि के लिए लड़ते हुए जो वीर गति प्राप्त करता है मुक्ति स्वयं उसका वर्णन करती है। शहीदों के नवागत यौवन को लक्षित कर कवि कहता है कि इनके शरीर को फूल से कोमल थे पर उनको जलाने का ईंधन कम पड़ा, इनका आत्मबल वज्र सा था सो पूरे जले नहीं। उस युग के युवकों को जोश आए, ऐसे ओज भरे शब्द में मेघानी उनका हौसला बढ़ाते देश पर जान निछावर करने की प्रेरणा देते हैं। उनके काव्य में ऐसी तो तीव्र गति और उदात्त भावना है कि उस समय का युवा वर्ग देश के लिए सब कुछ त्याग कर सर पर कफन बांध कर निकल पड़ता था। घटमा घोड़ा थन गने आत्म नीचे पांख अन देखेगी भूमि पर यौवन माने आंख आज अनदीप भूमि तड़े कांठड़े विश्व भरना युवानों की आंखों अड़े पंथ जान्या बिना प्राण घोड़े चढ़े गरुड़ सी पांख आत्म विषय उगड़े। गांधी जी जब गोलमेज परिषद में जा रहे थे तब मेघानी ने छिल्लो कटोरो अंतिम प्यारा काव्य लिखकर भेजा था। जहाज छूटने के बाद थोड़ा सुकून मिलने पर गांधी जी ने एक से बाद एक पत्र पढ़ने को दी। महादेव भाई उन्हें एक काव्य थमाते हैं। गांधी जी उसे पढ़कर क्षुब्ध हो जाते हैं और कहते हैं, इसमें मेरी स्थिति का जो वर्णन है वह बिल्कुल सच है। कवि ने समूचा हृदय उसमें उड़ेला है। एक काव्य इस प्रकार है, छिल्लो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू छिल्लो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू सागर किनारा अंजलि नव ढोड़ जो बापू अणकूट विश्वासे वह्यु जीवन तमारू दूरतो दगल बाजो थकी पड़्यू पनारू शत्रु तने ओळे घणी सुक्ति सुनारू आ आखरी मुशीक ने शिर सोच हो बापू कापे बने गर्दन रिपु मन मापू बापू। अंतिम सांस लेते हुए एक देशभक्त सेनानी अपने बंधुओं को संदेश जो देता है वह बड़ा ही मर्मस्पर्शी और करुण है। सो रे सलाम मारा भानुड़ा ने केजो रे जाजेरा जुहार जगने देजो बजी मड़ायु ने एने सौने माफा माफ केजो ने रुकिया मराठी तुमने रेजो जे। खून से लथपथ घायल सैनिक जब लौटते हैं उसका शब्द चित्र देखिए, गिरफ्त टपकती सो जोड़ी समरा गणती आवे केसर वर्णी समर सेविका कोमल सेज बिछावे घायल मरता मरता रे मातमी आजादी गावे। ये सिंधुड़ों में से बोल रहा हूँ जिसको बैंड किया गया। ऐसे गीतों की पुस्तिका भले ही छोटी सी थी लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि अंग्रेज हाकिमों को उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। मेघानी ने स्वयं जान की बाजी नहीं लगाई थी परंतु उनके इस प्रकार के प्रोत्साहन ने, उनकी कविता ने आजादी की आग में प्राण फूंकने का भगीरथ कार्य किया। सन 1931 में कवि उमाशंकर जोशी का खंड काव्य विश्व शांति प्रकट होता है। इसमें आप गांधी जी के जीवन और कार्य को व्यापक संदर्भ में लेते हुए कहते हैं, तमें तो पूर्व ना छो ना के ना छो पश्चिम ना अहिंसा सत्य प्रेम थोड़ा से कोई एक ना। गांधी युग के एक और महत्वपूर्ण कवि सुंदरम सन 1933 में गोया भगत ने कड़वी बाणी नामक काव्य संग्रह देते हैं। इनमें कई हल्का सा प्रगतिवाद का स्वर भी सुनाई देता है परंतु आगे चलकर आप भी गांधी के रंग में रंग जाते हैं। अन्य एक उल्लेखनीय कवि है कृष्णलाल श्रीधराणी। सन 1934 में आपका कोरिया काव्य संग्रह प्रकट होता है। श्री श्रीधराणी ने 1930 की दांडी यात्रा में भाग लिया था और उसके कारण जेल की सजा भी हुई थी।
आपने गांधी जी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानी की तत्कालीन मनोदशा इन शब्दों में साक्षात की है। आवगुण आश्रमे मळे नहीं स्वतंत्रता, जंपगु नथी लगार जो नथी स्वतंत्रता, स्नेह सौख्य सौ हराम नाम मळे स्वतंत्रता, जीवगु मर्या समान ना यही स्वतंत्रता। इनके अतिरिक्त आपके समकालीन कवियों में खबरदार, सुंदर जी बेटाई, स्नेह रश्मि, मनसुखलाल झवेरी, करसनदास माणिक, इंदुलाल गांधी आदि कवियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के कविता लिखी थी। ये रचनाएं प्रभात फेरी में, सभा में तथा जुलूसों में गाई जाती थी। अमरेली शहर के प्रज्ञाचक्षु कवि हंसराज का परदेशी भूख्या टोपी वाला ना टोला उतरा गीत तो सरकार विरोध का संग गान बन गया था। उनकी 18 पुरुषों की पुस्तिका राष्ट्रीय रणगीतों को भी उस समय सरकार ने प्रतिबंधित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयंती दलाल, पादरना तीरथ, रमनलाल देसाई दिव्य चक्षु तथा भारेलो अग्नि, कन्हैयालाल मुंशी तपस्विनी और जैसी कई छोटी बड़ी रचनाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि है। इनमें भारत की आजादी का आंदोलन, स्वतंत्रता की महिमा आदि है, परंतु ये सब कुछ चरितार्थ नहीं होता। हालांकि इन सब के कारण वातावरण जागरूक जरूर हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इन पर कोई रोक तो नहीं लगाई थी और न ही उनके लेखक प्रकाशक को दोषी घोषित किया था, किंतु गुजरात के प्रतिष्ठित नाट्यकार जसवंत ठाकर का उपन्यास, जो कि नानू ठाकर के नाम से लिखा गया था, सितमनी चक्की मां, सूरत के नवयुग पुस्तक भंडार में 1931 में प्रकाशित किया था और आदित्य मुद्रणालय ने उसे छापा था। सरकार ने उपन्यास को प्रतिबंधित घोषित नहीं किया, किंतु जसवंत ठाकर पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। लेकिन मृदुला साराभाई की दूरदर्शिता के कारण वे सुरक्षित रूप से मुंबई भाग पहुंचे। क्रांतिकारियों के जीवन को विषय बनाकर सन 1935 के आसपास चंद्रकांत भट्टी उपन्यास छपा था। आगे चलकर गुजरात के प्रसिद्ध नाट्यकार श्री हसमुख बाराड़ी ने दूरदर्शन के लिए उसके धारावाहिक बनाया था। अन्य साहित्य स्वरूपों की तरह गुजराती कहानी में भी स्वतंत्रता की तरफ अनेक ढंग से प्रकट हुई है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी आए उसके पहले हमारे साहित्यकारों ने अपनी कृतियों द्वारा एक उत्तेजक वातावरण तैयार किया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया था। सन 1900 में लिखी गई अंबालाल सागरबाई देसाई की कहानी शांतिदास इसका प्रमाण है। शांतिदास अपने बेटे भिखारी दास को उच्च शिक्षा के लिए गांव से बंबई भेजते हैं, परंतु पुत्र तो मुंबई के पारसी लड़कों की तरह विदेशी जूतों से आकर्षित होकर के महंगे जूते पहनता है। छुट्टियों में जब वो घर आता है तब गांव के लड़के भी उससे वैसे महंगे जूते मंगवाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में करीब 400-500 जोड़ी विदेशी जूते आ जाते हैं। परिणामतः गांव के मोचियों का उद्योग धंधा चौपट हो जाता है। अन्य चीजों का लेखन भी यही होता है। पूरे गांव के कारीगर वर्ग की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। गांव के पंचों के पास शिकायत जाती है। अंततः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि गांव में न तो विदेशी माल लाया जाएगा और न ही बेचा जाएगा। 1947 में आजादी तो आई, परंतु अपने साथ वह कई भीषण आघात भी लाई। एक तो देश का बंटवारा हुआ था और ऊपर से गांधी जी की हत्या हुई थी। स्वराज आया लेकिन सुराज्य कहाँ, प्रश्न लोगों के मन में उठने लगा था। इस पशोपश को कवि उमाशंकर जोशी ने बड़े सटीक रूप से स्वर दिया है और वो कहते हैं कि देश तो आजाद थाता नहीं करो, कैशु करो, देश जो बर्बाद थाता नहीं करो, कि पुण्य आगड़ा भी है। आभार आप सबका। साहित्य अकादमी का भी आभार। बात करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी जी। आपने गुजराती साहित्य के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। बीच में तकनीकी दिक्कतों से आदरणीय हरीश त्रिवेदी जी से हमारा संपर्क कट गया था। सर आप कुछ तो बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर ले सर। हाँ, मैं अनुभव में कह रहा था कि मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो कि अहमद अली का हुआ क्या, वो छपा कि नहीं छपा, तो बस इतना बढ़ा देता हूँ कि वो छप गया, क्योंकि एम फॉस्टर के बड़े प्रभावी मित्र थे, सरकार में बैठे थे, ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज के लोग थे, ब्रूक्सबरी ग्रुप के लोग थे,
तो उनके विषय से वो उपन्यास छप गया। और एक ही बात मैं और बताता हूँ आपको, हुआ क्या है, कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने अपने घर में एक विशेष व्यवस्था कर रखी है कि जब भी मैं जितना समय है उससे अधिक बोल देता हूँ और बोलता चला जाता हूँ, या मैं कुछ गलत बात कहने लगता हूँ, या मैं कुछ बोरिंग बातें कहने लगता हूँ, तो मेरे घर की बिजली चली जाती। तो मेरे घर भी नहीं हुआ, देखिए हफ्ते भर से नहीं गई, आज चली गई, मेरे बोलते बोलते चली गई। तो अकेले अंग्रेज थोड़े थे जो लोगों को बोलने से रोक सकते थे। स्वतंत्र भारत की बिजली भी लोगों को बोलने से रोक सकती है। और अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 15 अगस्त का कार्यक्रम है और इसका समापन 15 अगस्त को ही हो जाए, 16 अगस्त तक न चले, यह सब हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जी के पास चलते हैं। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि हमने पहले भी अनुरोध किया था कि अपने वक्तव्य को थोड़ा सा संक्षेप में 10 मिनट तक के भीतर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जी प्रोफेसर तथा भाषा और हिंदी सेल NCERT दिल्ली के विभागाध्यक्ष हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर और PhD की उपाधियाँ प्राप्त की। आपकी कहानियाँ, कविताएँ और लेख विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत पाठ्यपुस्तकों के विकास में मुख्य समन्वय के रूप में कार्य किया है। आप पत्रकार, लेखक, पाठ्यक्रम डेवलपर, पाठ्यपुस्तक लेखक, रेडियो, TV और फिल्म समन्वय और कार्यकारी निर्माता हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं तथा इसके अलावा हिंदी में 100 से भी अधिक पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। आपके 2 कविता संग्रह और गद्य संग्रह 3 प्रकाशित हैं। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ बाल लेखक पुरस्कार वर्ष 2001-2002 से सम्मानित किया गया। आपको CIIT, NCERT तथा द्वारा शैक्षिक फिल्मों के निर्माण के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपने हिंदी साहित्य पर व्याख्यान देने के लिए दुबई, अबू धाबी, शारजाह, USA, UK, स्पेन, बुडापेस्ट आदि देशों का सांस्कृतिक दौरा किया है और जबशुदा साहित्य पर आपका कार्य अत्यंत चर्चित रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर रामजन्म शर्मा जी से अनुरोध परम आदरणीय राव साहब, सभी विद्वान लेखक, रचनाकार एवं मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय साहित्य विषय गोष्ठी में भाग लेते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा देश वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था, कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। सन 1885 से लेकर 1947 तक का समय तो काफी त्रासद था। 1885 का वर्ष काफी तनाव भरा था। अंग्रेजों के मन में इसी वर्ष ऐसा भाव जगा था कि भारत में उनका साम्राज्य सदैव के लिए स्थापित रहेगा, उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा। पर काल का पहिया कोई रोक सका है क्या? जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ नजर घुमाते हैं तो धीरे धीरे अंधेरा छटने लगता है। गांधी जी ने वो राह दिखाई जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, जिसके चलते भारत आजाद हुआ। कहते हैं जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब हथियार उठता है, पर गांधी जी के शब्द कभी समाप्त नहीं हुए। भले ही नरम दल और गरम दल ने अपनी राह बनाई और अपनाई, पर शब्द की सत्ता दोनों बनी रही। ऐसे ही समय में शब्द साहित्य के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। शब्दों की सत्ता ने अंग्रेजों को सोचने पर बाध्य कर दिया। फिर क्या था, उन्हें भी जब्त करो, जला दो, समाप्त कर दो, पर क्या उनकी अस्मिता कभी समाप्त हो पाई? ब्रिटिश सरकार कर पाई? नहीं। यहीं से नींव पड़ी थी भारतीय साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की, ताकि स्वतंत्रता का वह स्वर धीमा पड़े, पर वह स्वर तो और ऊंचा होता गया। पहले हम हिंदी के गद्य साहित्य की बात करते हैं जो जब्त किया हुआ पाया गया, तो बहुत संक्षेप में हम
रखेंगे। चांद का फांसी अंग, सब जानते हैं कि चांद का फांसी अंग जो है वो जब्त किया था अंग्रेजों ने, 1928 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। आज़ादी के बाद एक बार पुनः इसका प्रकाशन हुआ और सन 1857 से 1928 तक स्वतंत्रता संग्राम में जो कुछ हुआ उसका प्रामाणिक परिचय इसमें दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष घटनाओं का मार्मिक चित्रण तब के देखे हुए लोगों द्वारा किया गया है। जैसा कि कहा गया है कि ये जो चीजें थी बहुत मौखिक थी, तो जो भी मौखिक साहित्य था, जो लोगों को प्रताड़ित करने का अंग्रेजों का जो हिसाब किताब था, उसका पूरा लेखा जोखा इस फांसी अंक में दिया गया है। चांद के मासिक जब्तशुदा फांसी अंक का संपादन कहते हैं कि कभी भगत सिंह भी इसमें लिखा करते थे और इसका प्रथम प्रकाशन 1922 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ और इसके संपादक थे राम सिंह सहगल, महादेवी वर्मा, नंद किशोर तिवारी और मुंशी नवजादी लाल उस समय तक इसमें संपादन का काम करते रहे। 1928 नवंबर दीपावली के अवसर पर चांद का फांसी का पहला अंक निकला, जो चांद के फांसी अंक का 7वां अंक था। यह 1928 में प्रकाशित हुआ और इसमें 325 पृष्ठ थे। जैसा कि अभी वक्ताओं ने कहा, विद्वान वक्ताओं ने कहा कि पत्र टाइप छपते थे, सब पम्फलेट सब छपते थे, इस तरह की सामग्री उसमें छपती थी। इस पत्रिका में स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला गया। वास्तव में गांधी जी या जो भी स्वराज आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, उनका कहना था कि अगर स्त्रियों की भागीदारी इस आंदोलन में नहीं होगा तो वो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए चांद का जो फांसी अंक था, इसमें स्त्रियों की भागीदारी के बारे में बहुत बातें कही गई थी। चांद के फांसी अंक की एक विशेषता ये है कि चांद की फांसी अंक में छपी सामग्री में मृत्यु दंड की क्रूरता और कुत्सित पद्धति पर अनेक लेख और कविताएं थी, इसलिए कि इसको देख पढ़ करके लोग डरेंगे और इस तरह से चीजें इसमें दी गई थी। पर इसकी बहुत निंदा की गई, घोर निंदा की गई और ये इसमें सब छपा हुआ है। कहा जाता है कि सरदार भगत सिंह छर्प नाम से इस फांसी अंक में उन्होंने लिखा था और पहले भी वो लिखते थे। मित्रों, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं 1850 से 1885 तक का। 1980 से 50 से 1885 तक जब हम देखते हैं तो अंग्रेजों का इतना अत्याचार बढ़ चुका था कि लोग डरते थे बोलने से। आज़ादी की जो अभिव्यक्ति थी वो भी बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी, लोग कुंठा में कुटित हो गए थे। तो क्या हुआ, महातेंदु ने कहा कि अंग्रेजी राज तो सिर पर है, इसलिए ताकि थोड़ा दबी जबान में ही कहा जाए। तो यहाँ से हिंदी लेखकों में एक दबी जबान का लेखन शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि बागवा आया गुलिस्तान में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। इस तरह से उन्होंने ये अपना मत व्यक्त किया। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है जो बलिया के ददरी मेले में उन्होंने दिया था और उस भाषण में उन्होंने बताया था कि भारत के लोगों को किस तरह से रहना चाहिए परोक्ष रूप से। जैसे कि दबी जबान में उन्होंने कहा कि हम दबी जबान में अपना अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। मैंने उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि हमारा देश जो है अगर आलसी नहीं होता तो कब का स्वाधीन हो गया होता। और अंत में बहुत बड़ा लेख है, भाषण बहुत बड़ा है उनका। अंत में उन्होंने कहा है, भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेशी वस्त्र और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में बात करो, अपनी भाषा में व्यक्त करो। उनका एक वक्तव्य है, कविता ही है, निज भाषा उन्नत है सब भाषा का मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये कोसूल। इसको लोगों ने क्या किया कि ये जोड़ दिया कि ये हिंदी के लिए कहा है, निज भाषा उन्नत है। निज भाषा से अर्थ उनका था भारतीय भाषाओं से। जितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, आजकल तो 1652 भाषाएं और बोलियां हैं, 22 जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, 8वें शेड्यूल में दी गई वो जो भारतीय भाषाएं हैं, तो उनकी बात वो कहते थे। फिर उन्होंने भारत दुर्दशा अधेड़ नगरी नाटक लिखा और भारतेंदु ने 1864 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील की एवं ग्राम गीतों के संकलन की योजना बताई। अब हम प्रेमचंद का नाम लिए बिना हमारा बक्सर भी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे जो बहुत निडर थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उनको ये डर नहीं था कि सरकार क्या कर लेगी हमारा। तो उनकी एक पुस्तक सोजे वतन नाम से, जो कि पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, वो जब्त की गई। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। इसमें 5 कहानियां थी और नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। क्योंकि ये कहानियां हिंदी में भी छपी, इसलिए इनका जिक्र करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। पहली कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह कहानी 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी कानपुर से। दूसरी कहानी शेख मखमूर, तीसरी कहानी यही मेरा वतन है, चौथी कहानी शोक का पुरस्कार और 5वीं संसारित प्रेम। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उनको तलब किया, कहा कि इसको पकड़ के प्रेमचंद को ले आओ, नवाब राय को पकड़ के ले आओ। उन्होंने क्या किया कि बैलगाड़ी में बैठ करके और वहाँ पर हमीरपुर के कलेक्टर के पास पहुँचे। कलेक्टर ने कहा कि ये किताब तुम्हारी लिखी हुई है? उन्होंने कहा जी सर हमारी लिखी हुई। तो ऐसा साहित्य क्यों रचते हो? फिर उन्होंने डांटा फटकारा और कहा कि सरकारी नौकरी में हो, अभी खबरदार रहो, इस तरह की अगर रचना करोगे नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और फिर प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखा। मित्रों, इसमें एक जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इस कहानी का पूरे हिंदी साहित्य नहीं विश्व साहित्य में लोगों ने इसको बहुत सराहा है और ये कहानी प्रेमचंद की बहुत ही धरोहर है। इसमें देश प्रेम की जो बात कही गई है, दिलफरेब और दिलफिगार नाम के दो कैरेक्टर है इसमें, और दिलफरेब कहती है कि तुम जा करके दुनिया का जो सबसे अनमोल रतन है, चीज है, उसे लेकर के आओ। उसे पहला रतन फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू मिलता है, किंतु दिलफरेब उसे स्वीकार नहीं करती। वो कहती है कि नहीं तुम जाओ और ये नहीं है, मैं फांसी पर तुम्हें नहीं चढ़ाती हूँ, दूसरा खोज के लाओ। वह दूसरा रतन प्रेमी और प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लेकर आता है और फिर दिलफरेब के दरबार में जाता है। वो कहती है, उसे स्वीकार नहीं करती, कहती है कि ये अनमोल रतन नहीं है, तुम जाओ और ढूंढो। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का वही सबसे अनमोल रतन है। ऐसा है कि जब वो अंत में जाता है और एक पहाड़ी पर खड़ा है, एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि इससे पूरब दिशा में जाओ, वहाँ पर हिंदुस्तान नाम का एक देश है और वहाँ जाकर के देखो। वो जाता है तो कुछ लाशें दिखाई देती हैं उनको। एक सिपाही तलवार लिए हुए है, मरने के करीब है, उसके शरीर से खून बह रहा है। तो वो क्या होता है कि उस वक्त वो सिपाही जो मरने वाला है वो कहता है, वक्त तो ये क्या है, हमारे हाथ से निकल गया है, हमारे बाप दादा देश आज आजादी से निकल गया है और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्योंकि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय। और अंत में वो लेकर के वो जाता है खून, उसके खून का आखिरी कतरा निकल पड़ता है। एक सच्चे प्रेमी और देशभक्त ने देश के लिए अपना फर्ज अदा किया। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे वही अनमोल रतन है। और वो लेकर के जाता है और प्रेमिका को देता है, कहती है कि हाँ यही अनमोल रतन है, उसे अपना लेती है, अपने राजपाट में रख देती है। मित्रों, बरतानी हुकूमत का इतना बड़ा दबाव रहने के बाद भी प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी और उपन्यास लिखा, उसमें अभी थोड़ा सा जिक्र किया था उन्होंने, बेदी जी ने, उन्होंने 3 उपन्यास ऐसे लिखे जिसमें आजादी की लड़ाई के बारे में, रणभूमि, सेवा सदन और रंगभूमि। रणभूमि का जो सूरदास है, मैं बहुत आगे आऊँगा, जो मेरा रिसर्च वर्क है
सब सुधा गीत और एकता के तराने, मैं थोड़ा सा इसमें कह के आगे फिर मैं उसमें आता हूँ। रंगभूमि का सूरदास एक विरात्मा है, सूरदास का कथन है अंग्रेजों के लिए। देखिए ये कोट जो है बहुत जगह आप बहुत पाएंगे कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक अंधा आदमी सूरदास एक प्रज्ञा चक्षु है, आंखें नहीं है, वो उनसे लड़ाई लड़ता है अंग्रेज से और वो अंत में कहता है, मर रहा है, तुम जीते मैं हारा, यह बाजी तुम्हारे हाथ रही, मुझसे खेलते न बना, तुम मरे हुए खिलाड़ी तो नहीं हो, दम उखड़ जाता है मेरा, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है, हमारा दम उखड़ जाता है, हांफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते। देखिए इतनी बड़ी बात कर रहा है, खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज मारपीट करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता, तुम खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं, बस इतना ही फर्क है, तालियां क्यों बजाते हो, यह तो जीतने वालों का धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म तो है हमारी जीत ठोकना, हम हारे तो लेकिन मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम लेके खेलेंगे, हार कर भूमि से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। वास्तव में ये रंगभूमि है, प्रेमचंद का ये उपन्यास है जो कि आजादी की लड़ाई की एक ऐसी पहचान बनाता है जिसके सब लोग घायल हैं। वास्तव में रंगभूमि का उद्देश्य जो था औद्योगिकरण तथा अंग्रेजों के शासन अन्याय युद्ध जो है सत्याग्रह और असहयोग मूलक संघर्ष द्वारा उनके विरुद्ध जन चेतना को जागृत करना था। तो मित्रों ये प्रेमचंद हैं। इसके बाद बहुत सारे लेखकों ने हिंदी में लिखा। सबसे पहले मैं गुरुदेव का ही नाम ले लेना चाहता हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी रचनाएं की, उनकी रचनाएं हिंदी में भी आई और प्रतिबंधित भी हुई। आई भुवन मोहिनी नाम की उनकी रचना जो है हमें अपनी सब सुधा गीतों में सब ली थी। तो तत्कालीन लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, देवघन बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणदूत अज्ञे, जैनेन्द्र इला संजोशी, बेचन शर्मा गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जसपाल पंत प्रसाद निराला तुखेही, भगवती चरण वर्मा, बाल शर्मा नवीन, दिनकर, नरेंद्र शर्मा बच्चन, रामेश्वर शुक्लचंद, गोपाल सिंह नेपाली, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन राष्ट्रीय भावनाओं के लेखकों की कृतियों को हम देख सकते हैं। नवीन स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया और उन्होंने अनेक रचनाएं की। अब हम थोड़ा अपनी पुस्तक जो हमने कम से कम 10 वर्षों तक रिसर्च किया उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे। पुस्तक के बारे में नहीं, उस रिसर्च वर्क में जो भी आया जब सुधा की थे उसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश ने देश के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को परस्पर विचार विनिमय में सहयोग दिया। देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों के राष्ट्रीय साहित्य ने एक विशिष्ट पहचान बनाई और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन दिनों इस प्रकार के राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण पूरे देश में हो रहा था। साथ ही राष्ट्रवादी साहित्यकारों की रचनाओं की एक लहर सी चल पड़ी थी और ये लहर थी राष्ट्रीय आंदोलन के गीतों की। ये आजादी के तराने थे जिन्हें करोड़ों लोग गाया करते थे। अनेक देशभक्त इन राष्ट्र गीतों के निर्माण में लगे थे। इन गीतों के रचनाकारों में हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सरदार नौबहार सिंह टोहानी, कुंवर प्रताप चंद आजाद, टीकाराम सुखन, ब्रजनारायण चकवस्त, किशन चंद देवा, इंद्रजीत शर्मा, जोश मलिहाबादी, जानिसार अख्तर, सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी, साहिर लुधियानवी, चिरंजीवी लाल विद्यार्थी, मोहनलाल अरमान, सत्येंद्रनाथ नाथूलाल महार, ठाकुर ज्ञान सिंह वर्मा, पंडित विश्वनाथ शर्मा, बाबूराम शर्मा, हर्षदेव पांडे त्रिपुर, माधव शुक्ल, गुरमुख सिंह, रामनारायण वर्मा, हरिशंकर, रामदास गौड़, अटन कवि, त्रिभुवननाथ आजाद, महावीर वर्मा, अग्राम वर्मा, परेश शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। मित्रों ये मैं नाम जो पढ़ रहा हूँ इनकी रचनाएं प्रतिबंधित हमको मिली। ये किसी किताब से मैंने ये नाम नहीं पढ़े हैं, नेकेड आईज से मैंने इनकी पुस्तकों को देखा है।
आर्काइव में भी देखा है और अनेक लाइब्रेरियों में, जो जैसे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की बात की, या वहाँ पर आप चले जाइए अंडमान निकोबार में कुछ सामग्री हुआ क्या ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या हुआ, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, हालांकि ये रिसर्च को स्वतंत्र वर्क करना है, पीएचडी दूसरी विषय पर की, तो ऐसी सामग्री प्रतिबंधित मिली, 200 गीत मुझे ऐसे मिले प्रतिबंधित, जिसको मैं छांट करके रखा, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि सब में किसी न किसी नेता के प्रति, किसी उनके प्रति कुछ न कुछ जो है बातें कही गई थी। अगर आलस में है, आज़ादी की लड़ाई में ठीक से भाग नहीं ले रहा है, बचा नहीं बांट रहा है, समय पर जा रहे, तो उनके ऊपर ही गीत बना के, उनको कुछ कहते नहीं थे, कोई डांटता नहीं था, उनके ऊपर गीत बना करके गाने लगते थे। अब गांधी जी की ये गाना शब्दें भी थी उन पुस्तकों के पीछे लिखी हुई थी। तो मित्रों, ये आगे मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है आर्काइव में रिसर्च करते समय मुझे मिली थी। इन पुस्तकों का प्रकाशन वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, फतेहगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, जबलपुर, मेरठ, जालंधर, गया, छपरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, हरदोई, उन्नाव, पटना, इटावा, लाहौर, पंजाब में और भिवानी से हुआ था। तो चूंकि हिंदी बेल्ट में ये सब हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो हिंदी की किताबें जो बैन मिली थी, जब्त मिली थी, वो यहीं से छपती थी। इन पुस्तकों में अधिकांश संपादन है, गीतों के संकलन के साथ ही संकलनकर्ता ने अपने गीत भी दिए हैं। बहुत सी पुस्तकों में लगभग एक से ही गीत हैं। गीतों के रचनाकारों का नाम बहुत जगह नहीं दिया गया है। हिंदी की कुल 264 पुस्तकें प्रतिबंधित थी और उसमें लगभग 500 मूल गीत थे जिन पर प्रतिबंध लगा था। नीचे गीतों में जो सन दिया गया वो गीतों का रचनाकार नहीं है, वो पुस्तक के प्रकाशन का। बहुत सारी जो रचनाएं हैं उसके सन नहीं दिए हैं, उसमें नाम नहीं दिए हैं। ये बहुत अजीब चीज है। मैंने वहाँ आर्काइव में जो गीत निकाले उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, बहुत सारे गीतों में अज्ञात लिखा हुआ है, और जो नाम हमने पढ़े हैं अभी वो उन नामों से तो रचनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें अज्ञात लिखा हुआ है। और हमने भी देखा उसमें इतिहास देखते समय उनका, तो जिनको अंग्रेज कलेक्टर बुला करके और कह देता था कि भाई आगे से न करना, वो अपने अज्ञात नाम से लिखने शुरू कर देते थे। किसी किसी पुस्तक पर प्रकाशक और संकलनकर्ता का नाम दिया हुआ है, साथ ही कहीं कहीं गीतों के रचनाकारों का भी नाम दिया हुआ है। अभी एक बहुत विशिष्ट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आजादी के जब्तशुदा साहित्य का सर्वप्रथम अध्ययन 1976 में अंग्रेज विद्वान डॉक्टर एन बैरियर ने किया। उन्होंने 1907 से 1947 तक के प्रतिबंधित जब्त साहित्य को प्रस्तुत किया, किंतु डॉक्टर बैरियर का यह कार्य केवल अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी भाषाओं तक ही सीमित था। इन्हीं 4 भाषाओं पर उन्होंने काम किया था। भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 26 जून 1982 के रिकॉर्ड के अनुसार, मैं सभी भाषाओं के क्योंकि विद्वान लेखक बैठे हुए हैं, तो मैं इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थना के साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा। और ये जानकारी जो है 26 जून 1982 के रिकॉर्ड अभिलेखागार जो आर्काइव है हमारी, उसमें दिया हुआ है। और उसमें दिया क्या हुआ है, जब सुधा जो गीत हैं उनकी पुस्तकों की संख्या दी गई भाषावार। वो भाषावार संख्या है हिंदी में 264, उर्दू में 58, मराठी में 33, पंजाबी में 22, गुजराती में 22, तमिल में 19, तेलुगु में 10, सिंधी में 9, बंगला में 4, कन्नड़ में 3, उड़िया में 11। पंजाबी बंगला के अधिकांश गीत भी देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे, इसलिए ये सब गीत मिले जुले थे। तो मुझे ये डाउट हुआ कि ये कन्नड़ में 3 और बंगला में 4, तो मुझे इसका कोई स्रोत मिला नहीं। अगर आप सब विद्वान अपनी अपनी भाषाओं का अध्ययन अगर करें, इसमें कोई कार्य हुआ नहीं हो। कार्य इसलिए नहीं हुआ कि आप आर्काइव में जाएंगे तो आपको घुसने नहीं देंगे, उसमें आपको कुछ देखने नहीं देंगे, आपको किताब कोई नहीं देंगे देखने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने
ये सब चीजें हासिल की थी। तो गवर्नमेंट को, सरकार को भी चाहिए, इस मन से हम क्या कहें, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पर अपना शोध प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वो किताबें भी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, वो किताबें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। आप कितनी पुरानी पुस्तकें हैं। तो मित्रों, जब्त शुदा गीतों की देवनागरी लिपि में जो छपी हुई पुस्तकें हैं, उनके कुछ नाम भी आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे स्वराज की बंसी 1922, अहिंसा का झंडा 1930, आजाद भारत के गाने 1930, देश का गम 1922, शहीदों की याद 1931, गांधी गीत सागर 1930, गांधी जी का चरखा 1923। और आप देखिए, इस किताब को मैंने कई बार पढ़ा, भगवान गांधी अथवा स्वतंत्र भारत का बिगुल। गांधी जी को उस पर लिखा हुआ था, भगवान गांधी और स्वतंत्र भारत का बिगुल 1930। इन गीतों में इनका प्रकाशन 1922, 23, 28, 1929, 1930, 1931, 1932, 1940 में हुआ। ये पुस्तकें 500 से 6000 तक मुद्रित की गई थी। इन पुस्तकों की कीमत जो थी वो 3 पैसे, 1 आना, 4 आना से लेकर 1 रुपया थी। उस पर लिखा हुआ था, पुस्तकों पर लिखा हुआ है, एक मूल्य जो है 1 आना, 4 आना, 1 रुपया, इस तरह से लिखा हुआ है। और पृष्ठों की संख्या कोई 2 पृष्ठ की है, कोई 77 पृष्ठ की है, कोई 50 पृष्ठ की है। तो इस तरह से मुख्य पृष्ठ पर जो उसका फ्लैट मुख्य पृष्ठ है, उस पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के चित्र बने हुए हैं, कि अथवा किसी नेता, गांधी, नेहरू, तिलक आदि का चित्र छपा हुआ है। कुछ पुस्तकों के द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं। उनके ऊपर सत श्री अकाल, वंदे मातरम, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। गीतों को प्रभाती, चरखा गीत, वंदना, आभा, स्वराज गायन, खादी का डंका, देशभक्ति की आरजू, किसान, प्रार्थना, उद्बोधन, रणभेरी, शहीदों को संदेश आदि नाम से दिया गया है। गीतों में गजल, आभा और लोक गीत भी शामिल हैं। मित्रों, मैं पहला संस्करण हमारी पुस्तक का छपा था, वो बुक म्यूजियम में, वो 1 लाख छपी थी। वो पुस्तक बहुत पतली सी वही पुस्तक थी जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका एक संस्करण, 5वां संस्करण ये छपा था। और सरकार ने बड़ा मतलब करते हुए धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार को कि अमृत महोत्सव पर इसी पुस्तक को उन्होंने इस प्रकाशित किया है। ये 7वां संस्करण है। तो एकदम जीर्ण रूप में जो पुस्तकें थी वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये इसके पहले ये संस्करण था, इससे पहले और संस्करण था जो म्यूजियम में छपा हुआ है। और एक चीज और बताऊं, कहना भी नहीं चाहिए, आज हम इस पुस्तक को लेने जाए तो आउट ऑफ जब भी छपता है उसके 1 महीने के बाद हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपके सामने 1-2 गीत पढ़ देना चाहता हूँ, इसके बगैर अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। श्यामलाल गुप्त पार्षद, इस नाम से इन्होंने झंडा गीत लिखा था। अब फिर मैं कहना चाहूंगा कि इस गीत के लेखन का बताया जाता है कि 1924 में ये गीत लिखा गया था। ये जब्त हुआ था 1938 में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, गुरु को बरसाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये तो पार्षद जी का है, मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ। फिर वंदे मातरम नाम से बहुत सारे गीत लिखे गए, और जहाँ भी वंदे मातरम से शुरू होता था, अंग्रेज तत्काल उसे जब्त कर लेते थे। वंदे मातरम से उनको इतनी मतलब चिढ़ हो गई थी कि आप वंदे मातरम गाइए, दीवार पर लिख दीजिए, कहीं भी, मतलब वो रह नहीं सकता। तो क्या है, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हाथ अपने मातरम, सर चढ़ों के सर में चढ़कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झंकार वंदे मातरम, जेल में चट्टी घसीटे, भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भूख दे सीने में वह तलवार वंदे मातरम, डॉक्टरों ने नब्ज देखी, सर हिलाकर कह दिया हो गया इसको तो आजाद वंदे मातरम। ईद होली, दशहरा,
सबरा से भी सौगना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। जालिमों का जुल्म भी काबू सा उड़ गया, फैसला होगा सही दरबार वंदे मातरम। ये 1930 में जब्त हुआ था और इसी के लेखक का नाम नहीं है, अज्ञात नाम से लिखा हुआ है। 2500 पुस्तकें मैंने देखी कि पता करूं कि ये किसका के थे, लेकिन मिला नहीं। फिर जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि शायर हमारे, हाँ बस अभी एक हमारे पास क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपने सुना ही होगा। और आगे मैं बिस्मिल का नाम तो जरूर लेना चाहूँगा। फिर इन्हीं का है इकबाल का चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम है सुनाया। इसके बाद पुष्प की अभिलाषा आप लोगों ने सुना होगा। मैं चूंकि राम प्रसाद बिस्मिल का ये गीत 1929 में जब्त हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादली कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूरी मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीद मुल्क को मिलत तेरी इज्जतों के निसार, तेरी कुर्बानी की चर्चा कैद की महफिल में है। जय हिंद। विषय इतना महत्वपूर्ण है और आप सभी वरिष्ठ वक्ता हैं और आप सबको टोकते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मैं पुनः अनुरोध करूँगा अपने हमारे पास 7 वक्ता बोलने के लिए है, तो समय का थोड़ा ख्याल रखें। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रोफेसर राघवेंद्र पाटिल जी को। आप प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज धारवाड़ के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। आप डॉक्टर वेदगिरी कृष्ण शर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष, धारवाड़ साहित्य संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक समिति के अध्यक्ष, DSCRT कर्नाटक सरकार तथा कन्नड़ में प्रकाशित होने वाली साहित्यिक द्विमासिक पत्रिका साहित्य संवाद के संस्थापक संपादक रह चुके हैं। आपके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें ओराकुबल, प्रतिमुगल, देशगति शामिल है। इसके अलावा आपके 3 आलोचनात्मक कार्य, 4 उपन्यास, 2 जीवनी, 1 यात्रा वृत्तांत और 1 फिल्म की पटकथा प्रश्न भी प्रकाशित है। आपने समस्त साहित्यिक विधाओं पर 10 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है। आपको वर्ष 2005 में तेलुगु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको कर्नाटक साहित्य अकादमी पुस्तक पुरस्कार, चतुरंग प्रशस्ति, कारण पुरस्कार, गुरुरू प्रशस्ति, मास्ती प्रशस्ति, बेलगावी जिला साहित्य ट्रस्ट, विश्वनाथ बरवल्ली ट्रस्ट, मृत्युंजय सारंग माथा लिटरेरी फाउंडेशन, बसु पैटेट फाउंडेशन, आर्यभट्ट साहित्यिक फाउंडेशन आदि साहित्यिक संस्थाओं से कई पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय राघवेंद्र पाटिल। Now I would like to present briefly a few fragments of Kannada writing that were banned by British rule in India. As Wordsworth in his poem Sum of Life said, art is long and time is fleeting. There is enormous amount of literature in Kannada that inspired the masses to join the freedom movement and was coercively banned by the British. Due to time constraints, I am just presenting a few fragments of those writings. I must first refer to the poem written by Jnanapitha Awardee Varakavi, the blessed poet, Dr. Dattatreya Ramchandra Bendre. His poems normally were prohibited by British. Normally means the human sacrifice. The British government was terribly offended by this poem and it leveled charges against Bendre as conspiring against the British rule.
the government demanded the poet to explain the poem regarding its sane intention and to prove that it has a benign poetic interest. Vernacular flatly refused to do so, stating that it is none of the responsibility of a poet to explain or to interpret his own poet. Then British administration imprisoned the poet. He was kept in the prison at Hindalga in Belgavi district. He was detained there for 3 months and thereafter he was shifted to a small remote village, Mugad, about 14 miles away from Dharwad, where he was kept under house arrest for remaining 9 months. Besides, the British administration forbid all the government and private institutions from employing Vernacular for next 8 years. Vernacular was made to suffer for long for this powerful poem, Narabali. The poet Vernacular in this poem has employed a technique of inversion, and the evil spirit of British rule is represented as a cruel deity Rudrakali. This evil of British rule, which took the dimension of gigantic Rudrakali, is crushing under her right foot the freedom of all the Indians. The deity is not crushing any demon under her foot, but the legitimate freedom of the people. The inversion technique adopted in the poem renders all the human virtues and values as outcasts and tells them to be kicked off from the site of worship of this Mahakali. And the sacrifice of the human lives is sacred. The poem chants that freedom crushed under the right foot of this Mahakali could be redeemed only by sacrificing human lives. He writes as follows, I give in translation. To redeem the freedom crushed under her right foot, human sacrifice is a must, and it is nothing but sacred worship of Kali. But wild ruffians only call it a mundane war. Dr. T.R. Vernacular writes a postscript to his poem Narabali in his later poem Sakhi Gita as follows. I am giving in translation. Narabali poem made me sacrifice myself. Floods rushed over the lane to drown, and it broke my house into pieces, unsettling me and initiating me homeless nomadism. Perhaps this was the rare example of a poem written by a major poet that incurred the wrath of British government. In addition to this poem, Vernacular and many other Kannada poets wrote still ferocious poems criticizing the British rule that should have also incurred the wrath of the rulers. But because of the disguise the poetic form afforded, the contents of such poems were not understood and were not recognized by the British bureaucracy. The story like Jadava Janappa, the Weaver Janappa, written by Dr. Vetgiri Krishna Sharma, criticized the British rule for destroying the cottage industries that nourished the people in rural India. And Kannada dramas, which were very vocal in the expression of pungency against the British rule, greatly attracted the attention and wrath of British bureaucracy easily and were coercively prohibited. The play written by Anigeri Hussain Saba on Rani Channamma of Kittur was banned. This play depicted Rani Channamma's leadership in the revolt against the British in 1924. The performance and publication of the play Naragunda Bandaya, the revolt of Naragunda,
written by Achyutarao Billboard, was banned by the British government. But these playwrights were so tricky and they used to find some novel disguise to fool the administration. This Nargunda Bandaya was later renamed as Sir Malcolm Vijaya, the victory of Sir Malcolm, keeping the content of the play same, and it was allowed to be performed. Another play, Swajanodhara, written and performed by Garudu Sadasiva Rao, was scrutinized by the British bureaucracy, and some dialogues of the play were noted as objectionable, and the administration didn't permit the performance of the play. But again, the shrewd playwright disguised the content of those dialogues in lyrics, and the administration, without understanding the trick, permitted the play to be performed. Many folk forms of drama such as Yakshagana of Dakshina Kannada and Uttar Kannada coastal districts and Bayalanda of North Karnataka districts were banned by the British rule. Mogeri Padmanabha Adiga's Yakshagana Prasanga, Parajayavo Swarajyavo was banned. The performance of Sangya Bayalaka was not easily permitted in the North Karnataka districts. This play narrates an illegitimate relation between a married woman, Ganga, and a rich, jolly man, Sangya. The husband of the woman and his brothers murder Sangya. Then the murderers surrendered to British administration and also get converted to Christianity. Then the British rulers manipulated the prosecution and got them acquitted. The most heartening thing is regarding Kannada folklore, which has richly contributed to anti-British feelings and rendered great support for the rampant spread of the freedom movement in the rural areas of Karnataka. As the authors of these folklore were anonymous, the rulers were highly puzzled and confused. They didn't know who should be held responsible for those songs. And those songs were sung in day-to-day rituals like marriages, temple festivals, and others. For example, in marriages in rural areas of Karnataka, non-professional singers, the common housewives, sing Sobane songs, that's a form of folklore, narrating various rituals in the marriage. It is interesting to note how such songs imbibe the spirit of freedom movement. I shall just give one such Sobane song in translation. Suvi Suvale So, that is chorus. You need unity while cooking the rice and to win the kingdom. Do you think these exotics would hand over if you bet? Suvi Suvale So. Why are you sitting there inside? You participants of the movement, have your bath and come quickly wearing khadi for the worship of grinding stone. In marriage, the grinding stone is worship. You housewives and children, you two come together for this marriage of sane ones and to throw off the kingdom of these exotics. Suvi Suvale So. Another popular folklore form in Kannada is ballad called Lavani and Gigi songs. They contributed maximum to support the freedom movement in Karnataka. The ballads written by Pulakunda Bhimakavi were very popular and inspired masses to participate in freedom movements. As the writers of most of these folklores were anonymous, the singers were used to be arrested if some authority noticed such singing of patriotic fervor.
Thus, Kannada writings ever pestered the British authority and rendered great support to the freedom movement. It enlivened the spirit of patriotism in the masses and encouraged them to plunge into freedom movement. Thank you. मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री प्रभा वर्मा जी को। आप प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार, गीतकार और संपादक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। आपके 1 दर्जन से अधिक कविता संग्रह, 3 उपन्यास, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश और साहित्य पर 6 पुस्तकें, आलोचनात्मक निबंधों के 8 संग्रह, मीडिया पर 1 अध्ययन कार्य, अंग्रेजी में 1 उपन्यास जिसका शीर्षक है आफ्टर द आफ्टरमाथ तथा एक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित है। प्रभा वर्मा जी को रजत कमल, सर्वश्रेष्ठ गीतों के लिए राज्य सरकार के फिल्म पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, वायलार पुरस्कार और पद्म प्रभा पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। आपको 2 बार केरल संगीत नटाला अकादमी सम्मान से विभूषित किया गया है। प्रभा वर्मा ने मोहिनी अट्टम के लिए कई पदम लिखे हैं, जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, और कर्नाटक संगीत समारोह के लिए दर्जनों शास्त्रीय कृतियों की रचना की है। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2016 में प्रदर्शन कलाओं के लिए आपके गीतात्मक योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में आपको प्रशस्ति पत्र और शाल से सम्मानित किया था। आपको राज्य सरकार पुरस्कार, केसी सवालस्टियन पुरस्कार, के माधव कोटी पुरस्कार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुरस्कार, केसी डैनियल पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। आपने 1 दशक से अधिक समय तक भारतीय संसद के दोनों सदनों, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल बैठक आदि को कवर किया है। आप केरल साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। संप्रति आप साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल के सदस्य हैं। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार की निर्णायक जूरी के सदस्य हैं। संप्रति आप केरल के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही आदर के साथ श्री प्रभा वर्मा जी। Respected Subhashji Guruji, who says over this function, Dr. Srinivasa Raoji, who is the main host of this program, and the distinguished delegates belong to various states and various languages. It is with immense happiness that I address this august gathering. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to the Sahitya Akademi for having invited me to participate in the symposium, which is of national significance. It is in the fitness of things, I think it is in the fitness of things that Sahitya Akademi is organizing a symposium on a subject which I think never was discussed much. The fact that this is being held in connection with the Amrit, which is being celebrated in connection with our 75th anniversary of independence, that also matters a lot. That is why I say that it is in the fitness of things that we, the Academy, conduct this sort of a seminar. The Secretary, Dr. Srinivasa Raoji, deserves a special mention in this respect for having found a subject which remains hitherto untouched. Mr. Harish Trivedi ji, our learned professor of English, who spoke just after Guruji, was heard saying that this subject was discussed some time back, in the late 60s or so. But I think it was held by somebody else, some other organizations and not by the Academy. So far as my knowledge knows, Academy conducts this sort of a program on this sort of a subject for the first time in history, and that deserves a special mention. Satyananda used to say, when a people do not want their culture, the nation dies. This is all the more true in the case of great cultures, noble cultures, glorious cultures, including that of Rome and Greek. We have been witness to the crumbling down of such great cultures, despite the presence of
towering culture and luminaries like Socrates, Heraclitus, etc. It is against this backdrop that this subject assumes special significance. To go into the past, to dig out certain things from the past, and to kindle certain lights in the era of modernity with the energy that we derive from the past. In order to comprehensively understand the present, we have to clearly evaluate the past. Only on the basis of the past and present that we can chalk out the design for the future. The way we have to resort to in the coming days, that we can formulate only after clearly understanding what our past had been and what our present is. That is why shedding light on the past, especially literature of pre-independence era, and the literature that was proscribed by the British assumes significance. It offers a solid ground on which we can resist the onslaughts of the invisible invasion of late capitalism that menacingly moves towards us in these days. In one pretext or other, it goes without saying that always invasion in the field of literature and culture always comes slowly, silently, and of course in these ways. That's why I say that this sort of a symposium on a subject of historical importance assumes greater dimensions and significance. The era of pre-independence literature in India was agog with revolutionary poems and fictional tales that triggered off the nationalist sentiments in the hearts of millions of people, who, imbibing the essence of it, later turned against the British with the renewed vigor to put an end to the aggressive imperialist regime. Knowing this fully well, the British sought to crush the nationalist writings in the bud itself, and went on to the extreme of banning literary works of patriotic fervor and putting behind bars those who sought to use word as words. As a result of this policy of repression, many writers right from Kashmir to Kanyakumari were imprisoned and their books that were sources of inspiration proscribed. It is rather unfortunate that even after 75 years of independence, many of the powerful writings of that era that were banned by the British Raj still remain in the darkness. In the darkness of the National Archives in Delhi and the Indian Office Library at the British Museum without being x-rayed by probing researchers or enthusiastic historians. Probably with the only exception of Dr. N. Gerald Barrier, who brought out a book on the banned controversial literature belonging to British India of the period 1907-1947. The main drawback of this one and only book on this subject is that it failed totally in shedding light on the banned literature of South Indian provinces, as the author chose to confine himself to the language of northern states and the proscribed books of English, Hindu, Urdu and Punjabi only. He confined to these areas, he confined himself to these languages. So, the literature that emerged from the South Indian states, from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, etc., still remain in the darkness. Even the book Hindu Swaraj or Indian Home Rule written by Gandhiji does not get any mention in this book, as books belonging to Gujarat too did not figure in his maps of reference. Since then, no comprehensive attempt has been made to rediscover the writings belonging to other states that were considered inflammably dangerous by the British. Many such books are
in highly dilapidated conditions and are physically disintegrating, they are getting ruined, they are getting spoiled. In the dark corridors of the archives without being digitized and kept for the posterity. It is against this backdrop too that this symposium being held by the Sahitya Akademi assumes greater significance. We have to understand what had been going on in the past, and we are responsible to find it out and pass it on to the posterity. If we fail in that attempt, that will be crime to the nation as a whole. The posterity should not find fault with us for this note. However, the fact remains that the banning of books was not rampant in the southern states in general and Kerala in particular, compared to North Indian states. The reason for this is still unknown. It is common knowledge that at that point of time, Kerala remained as three provinces, namely Travancore, Kochi and Malabar. In Travancore, instead of directly dealing with the nationalist movement, what the British chose was to make the Divan regime of Sir C.P. Ramaswamy coming Iyer instrumental in getting things done. I think this might be one of the reasons behind this. Many powerful literary pieces did emerge from that part of that state exactly at that point of time. It is also worth mentioning that Sir C.P., the then Divan, was keen to deal with both the nationalist movement and the literary pieces that sprang up from that movement with a heavy hand. Yet, his focus was not on literature but on the physical revolts that posed a threat to his rule, as was evident in Kunnapura, Vayla, etc. However, it is rather unfortunate that the nationalist poems written in Malayalam do not figure even in the index of the contents of the book, titled Patriotic Poetry, banned by the British Raj. A book has come out with this title, Patriotic Poetry, banned by the Raj. But it doesn't have any mention about Malayalam, about Telugu, about Kannada. It is very unfortunate that even when we are digging out something valuable from history, we are marginalizing certain languages, marginalizing certain states, and marginalizing certain writers. It is very unfortunate. However, this has happened even in the case of this patriotic poetry book. This has happened in spite of the fact that many poems were written in Malayalam, and many of those poems were instantaneously banned by the British during the re-independence era. Even the word Malayalam does not figure in this book. At various points of historical significance, patriotic songs sprang up in Kerala. When Jawaharlal Nehru unfurled the flag of Purna Swaraj on 31st December 1929 at the Lahore session of the Congress, when revolutionaries such as Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed, when Mahatma Ji launched civil disobedience movement, when Quit India call was given by Mahatma Ji in 1942, and when many historically important events took place, poets ranging from Mahotsav of Trivandrum in the extreme south to T. Subramaniam Tirumba of Kasaragod in the extreme north came up with the nationalist poems that inspired Indians across the state, and this provoked the British to the core. The marching song that begins with the call Variga Variga Sakadiri, which means come along, fellow beings, was written by Amshi Narayana Pillai for the tumultuous occasion of Sahitya Satyagraha at Kozhikode in the year 1930. The song of valor got echoed in all the streams of the sub-jhanas that merged into the main flow that culminated at Kozhikode to hold the Satyagraha. Amshi Narayana Pillai himself was present in the jatha that proceeded from Trivandrum singing this song, the most patriotic song Kerala has ever had. This song, which formed a part of the book titled Padayanigalude Pattugal, which means songs of warriors, was promptly banned by the British in all the three provinces of Travancore, Kochi and Malabar. His celebrated poem Gandhi Ramayana, that depicts Mahatma Gandhi as Sri Rama,
Bharat as Sita and the British as Bhavan also was banned by the British. His poems titled The Second War of Bharat, Bhagat Singh and Jallianwala also were banned. The poet was imprisoned at Azadi. He has to be a subject of trial for having committed the alleged offense of writing seditious poetry. Rakta Geetam was yet another revolutionary anthology that was proscribed by the British. The book, published by some radical thinkers belonging to Chirakkal Council Literary Society of Colonial, contained daring poems written by a number of revolutionaries ranging from Srinivas to P. Narayan. The poem titled The Pledge begins with these words: "Oh, the sacred red flag, which is the life of the poor, fly aloft in the sky for long. These comrades shall stand under thee and give battle to imperialism unflinchingly. When will the sun of equality rise? Until such a time comes, we shall rally around thee, prepared to lay down our lives." P. Narayan's poem titled The Coming runs like this: "Here comes the hunger battalions nearer and nearer in order to kill foes and win rights. The oppressive people are coming unitedly to win complete independence for India." Another poem from the same anthology calls for taking sword, which begins with these lines: "You peasants who hold plough in your hands, you must change it for swords, with which you can shed red blood. Set out quickly for the fields of battle." This song was written by P. Palengatta. Another song, May It Become, begins with these words: "Let me once again stand erect before a society hallowed by equality and fraternity. May cataclysms destroy autocracy which in no survey humanity come about frequently. The peasants, the lowly, roam about as ghosts in the necropolis of landlordism, devoid of the means of progress." It goes without saying that the poets who appeared in the anthology Rakta Geetam hailed from the radical red stream of the Socialist Party, which later became the Communist Party. The anthology containing their poems, as expected, was banned and a hunt was on in search of these poets. The Assamese daily newspaper was banned for having published a poem titled "We Serve the Forward," written by Chowara Parmeshwaran, a rationalist. Chowara, who had participated in Vaikam Satyagraha of 1924, civil disobedience movement of the 1930 and the Quit India movement of 1942, was arrested and jailed. Mahagavi Kuttamobalan was also proscribed by the British as it contained sparks that would set the British regime ablaze. In late 40s, a story written by Punkunam Marki, a progressive writer, was banned as it contained a call for revolt against the American border administrative reforms that were launched by the then Divan Sahitya, who was nothing but a puppet in the hands of the British. The story narrates the tale of a tailor who insists on an American model stitching of a coat as against the wishes of the one who is supposed to wear it. The tailor finds everything alien, laudable. It reflected the pitiable plight that prevailed during the tenure of Sir C.P. and the British Judge, which jointly attempted to have an American model of dispensation in Travancore. Vailar Garjindu, which means Vailar Roads, is another poem which was banned during the British regime. The poem is about the Vailar uprising, which left so many revolutionaries martyred in the pre-independence India. The poet in this poem calls for the re-emergence of the revolutionaries with the optimistic view that they would spread throughout the length and breadth of the state in the times to come. P. Bhaskaran, one among the triumvirate of the red decades in the history of Malayalam literature, was arrested and made to walk the public streets handcuffed. Though written under the pen name Devi, it was found that the poem that incites the revolt was originally written by P. Bhaskaran, and he eventually was brutally tortured in police lockup. Another one that was proscribed during the pre-independence era was Mari Kundagal, written by Kundan Damodaran, who was a close associate of Vailar and P. Bhaskaran, not the revolutionary poets of that era.
Vaikya Muhammad Bashir, who is fondly called as Betu Sultan, had to remain in jail both for having taken part in the freedom struggle and for having written against the British Raj. He mobilized an anti-British movement and edited Ujjivanam, a revolutionary journal, as part of his nationalist activities. He wrote against the imperialist machinations so strongly in it, as a result of which an arrest warrant was issued against him. Vaikya Muhammad Bashir, who was arrested immediately before the start of the Salt Satyagraha, wrote his celebrated verse, many of his celebrated verse, while remaining in jail. Dhammarajyam, his famous short story which means the nation of righteousness, was banned in Travancore. The work provides an insight into the life of the people and their sentiments. His words, organizing terrorism across the streets, brutal roads of cruelty, the unjust laws, while the hapless victims scream. These lies provoked the British, who thought that it was against the inhuman nature of the imperialist regime. It was on the basis of that assumption the literary piece was banned. A.K. Narayana Pillai, one of the renowned voice of that time, also has to face the same fate, as his work Call for Revolution was considered by the government as having the potential to incite violence against the British administration. The poem contains these lines, wake up, it is time to unite, let us be brave. The British are singing at our hands of unity, it is high time to shun cowardice. The lines that portray the essence of self-reliance, self-independence, etc. left the British with the only choice of banning it. It should not go unnoticed that an illustrious writer, A. Ramakrishna Pillai, who was the editor of Swadesha Abhimani, was exiled from Trivandrum and his press was confiscated. He passed away in Kannur as he was denied permission to step into Travancore. Let me conclude this talk by quoting the lines of Mahavir Kumar Nasan, the poet laureate of Kerala. Freedom, it is nectar. It is the life of the esteemed. For them, dependence is frightening than death. Perhaps Assam is the one and only poet who equated independence and freedom with the nectar. When we celebrate Mahotsav of independence, he who considered freedom at that point itself as Amrit should not go unsung. Thank you. मित्रों, मराठी भाषा के प्रख्यात लेखक राजेंद्र जी को कार्यक्रम में होना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें पुणे से लौटना पड़ा। अब हम उड़िया भाषा के प्रतिष्ठित विद्वान चित्रंजन भोई जी के पास चलते हैं। आप एक शिक्षक तथा विद्वान हैं। उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में आपने MA तथा PhD की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। आप श्रेष्ठ साहित्यिक आलोचक, द्विभाषी कवि, अनुवादक तथा वक्ता हैं। आपने साहित्य और अनुवाद पर केंद्रित 3 पुस्तकें लिखी हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं के लिए 55 से अधिक शोध आलेख लिखे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई सत्रों की अध्यक्षता की तथा महत्वपूर्ण साहित्यिक मंचों पर व्याख्यान दिए हैं। आप कई पत्रिकाओं के संपादक मंडलों के सम्मानित सदस्य हैं। डॉक्टर भोई कई व्यावसायिक निकायों के सदस्य रह चुके हैं। आपकी रुचि और विशेषज्ञता क्षेत्रों में नया साहित्य, अंग्रेजी में विश्व साहित्य, ब्रिटिश साहित्य, भारतीय अंग्रेजी साहित्य तथा साहित्यिक सिद्धांत और अनुवाद शामिल हैं। बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर चित्रंजन भोई जी। Thank you very much. Very good evening to all of you. Thank you very much for the introduction, sir. Very good evening to all of you. Dear Dr. Srinivasrao, Secretary Sahitya, distinguished speakers, erudite audience, ladies and gentlemen. At the outset, I express my gratitude to Sahitya Akademi for organizing this symposium on banned Indian literature by British. It is a great initiative of Government of India and Sahitya Akademi in particular to make
aim to revive and popularize Indian literature banned during British rule as a part of the effort to celebrate 75 years of India's independence. I'm privileged to be a part of the program. Well, if we ponder over the history, we witness the coloniality of the colonial immigrants, which gave birth to nationalist literature during British rule. The enforcement of stringent and inhuman British rule over the years starts to be the identity of India. The quest for identity became a major concern for the colonized Indians. Odisha's contribution in freedom movement can never be ignored. The history of British Odisha is quite curious. I am from the land that witnesses the first organized freedom movement known as Bhavan Rebellion. Started 40 years before the historic Symposium mutiny of 1857. To bring an end to British rule in India, many poets, writers, activists, and others have contributed immensely. They have seen the toll, horrors and brutality of the British Raj, trials and tribulations of impoverished Indians, sorrows and sufferings, fights and predicaments of millions of Indians, and their untiring protests against British hegemony. They have been a part of it all with just a pain in the hands, not just pains, but the sentinel of their conscience, voice for the speechless masses, and cry for freedom and reform, and voice for justice against intimidation and exploitation. Nevertheless, their attempts to bring forth the misery of millions of Indians and their sacrifices are candidly reflected in their writings. They are the guiding force who paved direction to the Indian to voice against British Raj. Those legendary literary figures should be commemorated and paid tribute to, but for whose sacrifices we would not have enjoyed the bliss of independence that we are enjoying today. The American poet Henry Wadsworth Longfellow justified the sayings and sorrows included earlier. Lives of great men all remind us we can make our lives blind. The parting behind us footprints on the sands of time. It is time to remind the contributions of those heroes of our nation who have left their footprints for us to follow to make our lives blind, meaningful, and worthwhile. Indeed, the poets and the writers maligned by the Britishers and even most derided by the tyrants were anonymously claimed as the human encyclopedia of the nation. The Colonial call of independence pricked the conscience of many poets and writers and compelled them to write to instill nationalism and patriotic feeling among Indians. It would be a sacrilege and blasphemy if we do not reckon their contributions. But it's difficult to recount everyone's contribution within a much too great time. I have attempted to highlight some literary figures who really ignited the Indians to come forward and join organized freedom movements and therefore despised by the British. Their writings really acted like an ignition spark to set fire to British supremacy in India. Literatures of pre-independent India bring back to our memory the realistic picture of colonial India. The disproportionate adulation and traditions of literary figures and the native Indians were grounded on the important understanding the peak and core of their identity crisis and social concerns which took the form of resistance against the colonial power. Many poets and writers were sentenced to imprisonment and the literatures were banned by British on sedition charges. Many journals, periodicals, books were banned by British for a variety of reasons. Indeed, an attempt has been made to
highlight some Odia poets and writers who created an impact on Odias by their priceless literary contributions and creations. One such great writer of the pre-independent India was Mahotsav. He was a saint best, and he is one such Odia writer who not only got arrested and jailed for his patriotic and nationalist writing. His immortal book, Colonial, was banned by the Britishers so as to seize his patriotic voice. He was deeply influenced by Mahatma Gandhi. At the same, he was not simply propagating religion, but raising his voice against injustice, bigotry, lawlessness, and exploitation of the British rule in India. Colonial was a missile against the tyranny of the Britishers. This invaluable book created the message of India's faith. It was written in 1929 and completed in 1922. Paramhansa predicted that under the dynamic leadership of Mahatma Gandhi, India will get its independence, which became true later. He was an ardent follower of Gandhi's doctrine of ahimsa and satyagraha. Unfortunately, he was sentenced to 1 year imprisonment in Rosman regime for his patriotic writing and nationalistic motivation. His book, Kali Bhagavad, was banned through Gazette notification on 30th April 1934 by heathen Madras Court. Britishers harbored the impression that the book contained several pages of salacious matters intended to bring into hatred and contempt. Whereas the following lines and many such lines created havoc in the British camp and therefore he was jailed. And I quote, if the Satyagrahis get united, all disputes will be subsided. Europeans will leave. Mahotsav will drag them out. Barbarians. So these are certainly very inspiring lines and motivating lines for heathen Indians, those who came forward and joined in freedom movements. The ceaseless voices continued on and on till this death on 27 November 1963. Another important point of Odisha was a nationalist poet. He was poet Virokishore Das. He is a great nationalist poet, and I am prompted to delineate the contribution of Virokishore Das. Mr. Das was a vociferous supporter of Mahatma Gandhi's crime. However, the powerful poetic collection of Virokishore Das entitled Ananda, which is a pseudonym, and it has been discussed earlier many times by the speakers. Because those days, the poets and the writers, they were publishing their poems and writings under pseudonyms to get escape from the British area. So it was published as Manambar, but later it was published as Bhavan Bansi. And later it was published in Mukul Pradesh in 1922 in Odisha. All 5,000 copies, to our dismay, in the first edition were sold out in a few days' time. The content of the works illustrated the patriotic spirit, nationalistic thinking, and voice against the British oppression in India. Post-reading effect of the book spread like a wildfire. When it came to the ears of British establishment, they started hunting the poet. But the reports were banned as the poets and the publishers' names were unclear. Though Virokishore was suspected, yet no action could be taken as there was no evidence against him or against the publisher. The poems inspired millions and included a kind of linguistic spirit among Indians. The Britishers pressed a P-plus, where almost all the youth of Odisha were inspired and aggression. Anticipating the mass agitation and protest by the Indians, the book was banned. By then, Virokishore, the revolutionary poet, had already spread the message among the Indians.
and particularly among the Colonials. His Mohan Bangshi, Vedyohi Vida, and Ranabhumi are the collections that created sensation to the match to the embryonic Indians. The translated lines of his poems reads like this, and I quote, enemy has not left here. One is not cooked. Brothers, please come to my cave. Sound is hard at the margin, but there is no fear at all. Okay. Such lines really tempted the Indian ear to escalate the protest against the unjust English rules. British government, considering the book of Birabishwa Das provocative and inflammatory, penned all those. Two more poems, Ranagiri, Ranadunduri, of the same point, were also considered audacious and they are prepared. Another important point of the time was Panchali Mohanty, who was a Marxist in ideology, was on the few literary icons who had galvanized people against the atrocity of Indian government by his fiery and thought-provoking poems, which has stimulated the people. He was born on 20th April 1897 in the village Assam, known as Jallianwala Bagh, Odisha, in the district of Bhavan. This revolutionary part of Odisha is aptly considered and compared, justifiably compared with the quasi-natural Islam. He illustrates revolutionary point of Bengal and his point. Kaha kaha, kyun jati, paichi, mukati, tori, hori, hari, gohari. It's a wonderful line. And through this line, he wants to tell that no nation has got independence, or no nation is going to get independence by begging. Therefore, let us not beg before the Britishers, let us revolt against the Britishers so that we can get out. So this was a very provocative and inspiring line, and the Colonials got inspired by this book. Therefore, Britishers got along and banned this word. Then Kuntala Kumari Sabbat is a known face of Odisha, who is known as Bulbul, and often compared with Sarojini Naidu, was a multi-talented genius. She was a doctor by profession, but literary artist by passion. She led the women movement in Odisha and fought for the women liberation, an ardent follower of Mahatma Gandhi. Srimati Sabat penned down a lot of patriotic poems which influenced the youth of the time. A collection of poems, Alma and Colonial, were considered atrocious and subsequently banned. Then Ananda Patnaik is another important one. I will take it 2-3 minutes time if you call it this up. Ananda Patnaik is another important point of the time, and he is a poet and translator of pre-independent India, and he has been admired in the progressive Odia poetry as a revolutionary poet. Rakta Sikha is one of his collection of poems. Got readers' approbation and admiration for its patriotic sounds and nationalistic approach. He was deprived of getting education in Rabindra College or the premier colleges of Delhi for his revolutionary writing. His radical nationalism made him a firebrand revolutionary. His writings were provocative and inspirational, which put the British in trouble. The anthology Rakta Sikha and with Lord Flame was considered atrocious and therefore banned. And Sachin Rai is certainly the architect of modern Odia literature, has his own technique of writing poetry. The essential element is traced to the forest. In some of his poems,
like Dr. Sikha once again, claims of law, he has raised his voice of protest against exploitation of the whites in India. And I'm just repeating something, and towards the end, I would like to say, besides these points that I uttered and pronounced and went back, many other too registered their claim for admiration for their contribution. To name a few other nationalistic publications which were banned during those periods were the Avsar, Sahitya Chapter, Colonial, Jatiya Sangeet, Hindu-Muslim Ekata, Gita, Peer Vidrohi. So these are some important publications which were banned during that period. These literary pieces not only motivated people, but also made the government nervous and scared. In order to subjugate the audience, British government banned some other books such as Bharata English Raj of Gulchar Patnaik, Gita of Lakshmikanta Mahapatra, Veer Vidrohi of Ramakrushna Singh, Palasira Abosani of Hare Krishna Mata, and many more. Even the leaflets and the templates and pamphlets which were discussed by some other speakers were also banned. And I would like to take the names of the pamphlets which were banned in Odisha, where Nimantrana and Rashtriya Taranga. So these were the pamphlets which were banned in Odisha too. And some newspapers, leading newspapers of Odisha during that period and now also, the Samaj and Prajatantra, these two newspapers were also banned because publishing against the Britishers. And finally, Gopal Das and Uttam Gaurav Madhusudhan Das also triggered the spirit of Indians to fight against the British administration in India. Though their books were not banned, yet they confronted the British with violence and therefore they were jailed. Their provocative writing and speeches disturbed the British establishment to a great degree. Many other poets and writers and their works are still unexplored. Thus, it is right time to commemorate such sacrificing characters and their literary contributions. The discourse will be fructified if a serious attempt is made to explore the unexplored poets and writers and steps taken to revive and introduce their invaluable nationalistic poems and prose pieces in school, colleges, and university curriculum, so as to instill nationalistic spirit among the Indian citizens. Jai Hind, Vande Utkalam. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पंजाबी भाषा के डॉक्टर गुरदेव सिंह सिद्धू जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बातचीत करें। आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पंजाबी भाषा में MA और PhD की उपाधियाँ आपने प्राप्त की। आपने 3 दशकों से अधिक समय तक कॉलेज व्याख्याता, प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग सरकार पंजाब में निदेशक, उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। आपने पंजाब स्कूल शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। स्वतंत्रता आंदोलन, पंजाबी किस्सा साहित्य, पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास से प्रभावित होकर आपने अनुसंधान तथा कविता के संपादन आदि कार्य किए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर द्वारा आपकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर गुरदेव सिंह सिद्धू जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान करें। सबसे पहले तो आज़ादी के की मैं आपसे कुछ बात करूँगा पंजाबी लिटरेचर जो बयान किया जा सकते। जैसे आप सभी जानते हैं
पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आने वाला सबसे आखिरी प्रदेश था। 1845 में अंग्रेजों ने वहाँ पैर रखा, कब्जा नहीं किया। कब्जा उसके 4 साल बाद किया, लेकिन पहुँच गए वहाँ। कह दिया महाराजा गरीब सिंह ही होगा, लेकिन रेजिडेंट बैठ गया। जो कुछ होना था रेजिडेंट के हुक्म से ही होता था। गरीब सिंह तो 5 साल का था। तो उस साल ही एक शाह मोहम्मद पंजाबी का पोएट हुआ है, मुसलमान, उसने अंग्रेजों के खिलाफ कविता लिखी। कुछ पंक्तियां ऐसी थी, शाह मोहम्मद सिंह ने गोरियां दे वांग नींबुआ लहू निचोड़ छिपे। लड़ाई के दौरान ऐसे अंग्रेजों को मारा जैसे नींबू को निचोड़ते हैं। जब उसने कहा राधी खुशी दे मुसलमान हिंदू सिर दुआ दे वड्डी आफात आई मुश्किल, शाह मोहम्मद बिच पंजाब दे जी कदे नहीं सी तीस की जात है। तो अंग्रेजों के खिलाफ मनोभाव उसने प्रकट किए उसी साल जिस साल अंग्रेजों ने पैदा किया। उसके 30 साल बाद फिर नामधारी संप्रदा शुरू हो चुकी थी और उनके जो अबू थे बाबा राम सिंह, उनको अंग्रेजों ने देश बदल कर दिया था। उनके बारे में एक कविता लिखी गई बहुत बड़ी। शाह महमूद की कविता का नोट्स नहीं लिया किसी ने, लेकिन जो नामधारियों की कविता लिखी गई तो अंग्रेजों ने नोट्स लिया, उसका ट्रांसलेशन किया, उसका किया। उन्होंने शायद सिस्टम नहीं था बैनिंग का, मैं नहीं। लेकिन जो बैनिंग की बात चलती है जब्त करने की, वो 20वीं सदी में शुरू होता है। शायद इंडियन प्रेस एक्ट 1910 वाला जो है उसके बाद ज़्यादा जोर से बैनिंग शुरू हुई। तो पंजाब में वैसे तो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू से ही 1947 तक लिखा जाता रहा, लेकिन ज़्यादा जोर पड़ा मूवमेंट के साथ। जब कोई मूवमेंट शुरू हुई तो उसके प्रभाव के नीचे तो पोएट्री लिखी गई, लिटरेचर लिखा गया। जब मूवमेंट कमजोर हो गई थे उसका बंद हो गया, दूसरी कोई आ गई मूवमेंट, उसके बाद शुरू हो गया। ऐसे देखें तो हम 3 स्टेजेस देख सकते हैं। पहली स्टेज तो है 1912 से 14-15 तक की, जब गदर पार्टी का दौर था। अमेरिका से बहुत सारा लिटरेचर आया। दादा हरदयाल ने जो लिखे किताब के छोटे छोटे वो आए, वो सभी अंग्रेजों ने बैन किए। दादा हरदयाल पंजाबी के पंजाबी में भी लिखते थे, मीडियम एजुकेशन को उर्दू पढ़े थे, उर्दू में भी लिखते और अंग्रेजी में भी लिखते थे। वो सभी रचनाएं तीनों भाषाओं में छपी और यहाँ आती तो बैन होता था। गदर पार्टी का अपना मैगजीन था, न्यूज़पेपर वीकली था, गदर वो होता था, उनकी और पोएट्री थी। वो 3-4 साल जो से चला। उसके बाद बड़ी घटना तो भी जलियांवाला बाग की, लेकिन हैरानी की बात है कि पंजाब में जलियांवाला बाग में जो कुछ लिखा गया वो जब्त नहीं हुआ। बाहरले प्रांतों में लिखा गया वो जब्त किया पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन पंजाबी का कोई ऐसा कोई भी दस्तावेज बैन नहीं किया गया। उसके बाद फिर अकाली लहर आती है 1920 से लेकर 1925 तक चलती है, तो 5-6 साल। उसके दौरान बहुत लिटरेचर बैन हुआ, लिखा भी बहुत किया, जब्त भी बहुत किया गया। एक सर्वे के मुताबिक जितना अंग्रेजों के खिलाफ सारा लिटरेचर लिखा गया 47 तक, उससे आधा सिर्फ अकाली लहर के दौरान लिखा गया और जब्त भी ऐसे ही आधा उसी का हुआ। तीसरी स्टेज आती है 1931 से आगे 3-4 साल की, भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में जो लिखा गया उसको इधर बैन किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि अब भगत सिंह के बारे में बात करें। भगत सिंह की बात मैं सिर्फ पंजाबी में जो लिखा गया उसकी नहीं करूँगा, सारे हिंदुस्तान में भगत सिंह के बारे में जो लिखा गया वो बात आपसे करना चाहूँगा। इसलिए भी कि मैंने जो काम किया मेरी लिमिटेशन है, उसके मुताबिक मैं कर सका, लेकिन उसमें काम बहुत हो सकता है। आप लोग शायद आप खुद जब करने से शिष्य को जब से और को इंस्पायर करके इसके लिए काम करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, तो शायद पढ़ा जा रहा है या नहीं। Publications on Bhagat Singh, banned by the Raj,
मुझे इतना नहीं तक तो इसलिए पूछा था। अच्छा, ये जो मैं ढूंढ पाया वो है, अगर आपको वो सेफ्टी बोलना चाहिए तो मैं फिर इसके बाद ले लूँ। ये है बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और इसके साथ पिक्चर्स, तस्वीरें बहुत सारी बैन की गई। इनका अगर हमें थोड़ा डेटा देखना हो तो ऐसे है, बंगाली में 5, गुजराती में 3, हिंदी में 66, कन्नड़ में 1, जो मैं ढूंढ सका, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 1 मैं ढूंढ सका हूँ, और मराठी में 5, पंजाबी 11, सिंधी में 3, तमिल में 20, तेलुगु में 1, उर्दू में 30, इंग्लिश में 20 और 43 तस्वीरें जो बैन की, ये 208 बन जाती है सारे। अगर इनका हम एनालिसिस करें तो भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं। भगत सिंह के बारे में चर्चा शुरू हुई 8 अप्रैल 29 असेंबली बम केस के बाद। उससे पहले लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन भगत सिंह के बारे में पुलिस जानती थी। 27 में एक सर्कुलर निकाला पंजाब गवर्नमेंट, कहीं की डाक सेंसर का नेम है, 36 लोगों का लिस्ट थी, उसमें भगत सिंह का नाम था, लेकिन पब्लिक में नाम नहीं गया था। पब्लिक में नाम गया भगत सिंह का, इसके बाद असेंबली बम ड्रॉपिंग का, और 7 मई को वो सेशन कोर्ट में केस शुरू हो गया। वहाँ भगत सिंह ने अपना बयान दिया उन्होंने, उससे लोगों ने बड़े अखबारों में आया तो लोग इम्प्रेस हुए, थोड़ा उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहली जो पब्लिकेशन बैन की गई भगत सिंह के बारे में वो है वंदे मातरम। ये उर्दू में एक पोस्ट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, सरफरोशों ए वतन लोग आज फिर मक्तल में हैं। ये शब्द उसके ऊपर उर्दू में लिखे हुए थे और उसकी पब्लिकेशन नौजवान बादशाह अहमद सर ने की थी। ये 6 जुलाई 1929, यानी 1 महीने के अंदर अंदर ही वो छप गया। और दूसरा जो था उसके बाद उनका केस चला, तो 7 अक्टूबर 1930 को जजमेंट आई। इन 3 लोगों को फांसी, 7 थे जिनको कालेपन और दूसरों को थोड़ी, किसी को 7 साल सजा, किसी को 4 साल सजा। तो उसके बाद भगत सिंह के बारे में लिखे गए, एक तो खून का बदला खून, ये पोस्टर उर्दू में था, 24 फरवरी 1931, फांसी लगने से पहले ये। और उसके बाद उन्हीं दिनों में दूसरा जो छपा अंग्रेजी में, बी अवेयर, जो सामने आप देख रहे हैं वो साइड में अंग्रेजी में था, हाथी चक्कर लिखा, जो छापने वाले थे हाथी चक्कर थे। और ये 27 फरवरी 1931, यानी 23 मार्च से पहले जो छप चुके थे। एक तरह अंग्रेजों को चैलेंज था कि अगर तो फांसी दे दो, देखो हम भी क्या कर सकते हैं आपका, कैसे था। तो उसके बाद फिर फांसी हो गई, 23 मार्च 1931 को सजा अमल में ला दी गई। तो उसके बाद तुरंत जो रिएक्शन आया वो शायद लोगों को दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो तस्वीरें आई। एक ही महीने में 6 तस्वीरें आई, उनमें से 2 पंजाब में बैन की गई और 4 बंगाल में। एक तो पहली तस्वीर थी दी एंड, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितेंद्रनाथ दास, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक करके अपनी जान दे दी थी प्राप्ति, उनकी और कुछ और देशभक्तों की तस्वीरें थी। ये 4 अप्रैल 1931, यानी फांसी देने के 12 दिन के अंदर ये तस्वीर चाहिए। दूसरी इनकलाब जिंदाबाद, वो भी भगत सिंह की तस्वीर
4 अप्रैल को ये छपी, पहली लाहौर में जोधपुर में छपी, दूसरी लाहौर में छपी। इसके बाद फिर तीसरी तस्वीर जो आई वो ये आज़ादी के दीवाने, इसके ऊपर आज़ादी के दीवाने लिखा हुआ था। नीचे लिखा है शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटेंगे जुल्म का घर, मिटाएंगे जुल्म का घर देख लेना। इसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ है और साइड में सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव hearing the sentence of hanging death with pleasure, ये साथ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा उसके ऊपर। ये 9 अप्रैल 1931 को बैन की गई। अगली तस्वीर जो बैन की गई वो 3 शहीद ये थी। इसके नीचे लिखा हुआ था, ऊपर तो नाम थे तीनों पे, नीचे लिखा हुआ था सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव का अंतिम गान। उसके नीचे हिंदी में मेरा रंग दे बसंती चोला, किसी रंग में रंग के शिवाने माँ का बंधन खोला। ये कलकत्ता से छपी थी और बंगाल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। ऐसे ही एक और तस्वीर जो है वो थी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव हैंग, इसका हेडिंग था। और नीचे हिंदी में सरदार भगत सिंह और उसके मित्रों की फांसी हिंदी में ही लिखा हुआ था। और उसके साथ ही मुल्ताना भगत सिंह और मित्रों की फांसी ये लिखा है। ये भी बंगाल गवर्नमेंट ने बैन की 30 अप्रैल को। एक और तस्वीर जो हुई ये 3 विक्टिम्स ऑफ डेथ, इसमें भी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जेल में बिठाए गए हैं, हत्याएं लगी हुई हैं। ये भी बंगाल गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल को बैन की। अब देखना है कि लैंग्वेज वाइज पहली कौन सा प्रकाशन पब्लिकेशन डेवलप किया। बंगाली में फांसी, किताब का नाम था फांसी, नगेंद्र नाथ दास उसके प्रिंटर थे, कलकत्ता से छपी थी और ये 22 अप्रैल 1931 को बैन की गई बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इंग्लिश में ये मैनिफेस्टो ऑफ द नौजवान भारत सभा ये बैन की गई। ये पहले शब्द चुकी थी, ये शायद जुलाई 1929 को। गुजराती में थी भगत सिंह को, भगत सिंह की बायोग्राफी तो चिमन लाल ईश्वर लाल मेहता अहमदाबाद के, उन्होंने ये लिखी थी और बॉम्बे गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर 1931 को डेवलप की। हिंदी में आज़ादी के दीवाने ये किताब पोएट्री में लिखी गई, पंडित विद्या भास्कर शुक्ला इलाहाबाद। और यूपी गवर्नमेंट ने ये बैन की 8 फरवरी 1930 को। कन्नड़ में नादागुड़ी और नेशनल फ्लैग ये पैम्फलेट के बाद प्रिंटेड बाई खांडो रामचंद्रा भैसे, कर्नाटक प्रिंटिंग वर्क धारवाड़ ये छपी और बॉम्बे गवर्नमेंट ने बैन की 21 मार्च को। मराठी में भगत सिंह अच्छा पवाड़ा, बैलेट भगत सिंह, ये जे.बी. देसाई एंड एल.बी. रेंगुलकर, राय साहब, अश्विनी कुमार, इन्होंने छापी बॉम्बे से और ये भी बैन की गई। पंजाबी में वतन की लाल, उसमें पंछी कवि थे कोई पंछी जी, उन्होंने लिखी थी और जो पंजाब गवर्नमेंट ने बैन की 17 अप्रैल 1931। सिंधी में फांसी गीत माला लिखने वाले कोई हुंडराज लीला राम लड़काना ये थे, बॉम्बे गवर्नमेंट ने बैन की। तमिल में भगत सिंह कीर्तना मूर्तम दी राजा पिलई ऑफ मदुरा जिन्होंने लिखी और नॉर्मा प्रेस मद्रास से छपी और मद्रास गवर्नमेंट ने ये बैन किया। तेलुगु में सरदार भगत सिंह जीवची चित्रा
ये किताब सी कृष्णा स्वामी शर्मा लिखने वाले थे और मद्रास गवर्नमेंट ने बैन की। उर्दू में लाल झंडा और इनकलाबे हिंदुस्तान ये लाहौर में छपी और पंजाब गवर्नमेंट 18 अप्रैल 1930 को बैन की। भगत सिंह की बायोग्राफीज भी लिखी गई हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। उनमें इंग्लिश में सरदार भगत सिंह की शार्ट लाइफ स्केच रिटन बाय जितेंद्रनाथ सन्याल रहा था और कवि थे, उन्होंने लिखी और उसके नीचे उन्होंने लिखा डेडिकेटेड जो किया to the inspiring memory of Sardar Kartar Singh, who died at the gallows in 1915 while not yet 20, and whose life Bhagat Singh wrote in such a feeling language. ये सीपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बैन की। गुजराती में शहीद भगत सिंह की जीवन कथा वो जिसका चिमलाल ईश्वर लाल मेहता ने लिखी थी। हिंदी में शहीद सरदार भगत सिंह चंद्रावती देवी ने ये किताब लिखी और बिहार प्रिंटिंग प्रेस पटना से छपी थी और तो बिहार और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। सिंधी में इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की बायोग्राफी लिखन बाई द्वारका दास रुचि राम हैदराबाद सन से बॉम्बे गवर्नमेंट ने बैन की। तामल में सरदार भगत सिंह की बायोग्राफी बुक गणपति प्रेस से मनारगुड़ी से छपी है और मद्रास गवर्नमेंट ने बैन की। तेलुगु में सरदार भगत सिंह जीवथा चरित्रा ये सी कृष्णा स्वामी शर्मा ने लिखी और मद्रास गवर्नमेंट ने बैन की। उर्दू में कातले बेगना और शहीदान वतन उर्दू में पैम्फलेट था जो सनातन धर्म की प्रेस लाहौर से छपा और पंजाब गवर्नमेंट ने बैन की। ये पांच बड़ी बायोग्राफीज आगे भगत सिंह को फांसी हो गई तो उसके बाद फिर चलता रहा 2-3 साल, लेकिन जो मुझे मालूम हो सका आखिर में कौन सी लिखी गई उनमें से एक तो सरदार भगत सिंह जीवता चरित्रा 1935 में वो लिखी गई, वो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने बैन की। क्षमा आजादी के 3 प्रबंध ये 1936 में लिखी गई और पंजाब गवर्नमेंट ने बैन की। भगत सिंह हिंदी में लिखी गई एक किताब 1939 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंसेस यूनाइटेड प्रोविंसेस गवर्नमेंट ने ये बैन की। ऐसे कुछ और मसलेनिस हैं, 1-2 का नाम जिक्र करना चाहूँगा। उनमें एक तो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, किताबें तो लिखी गई और पोस्टर भी लिखे गए। ये तस्वीर बुक थी, तस्वीर बुक भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए कमेटी बन गई, डिफेंस कमेटी बनी, उसमें कलेक्शन इकट्ठी करनी थी, उसके लिए रसीद नहीं थी तो रसीद के ऊपर उनकी तस्वीरें छपी हुई थी, ये भी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। एक मातृ पूजा बंगाल गवर्नमेंट ने की, ये मैच बॉक्स सिलाई टीला वाली डब्बी, उसके ऊपर एक फोटो बनी हुई थी, सिर से खून निकल रहा था जैसे टीला भगत सिंह का हो, तो बंगाल गवर्नमेंट ने बैन कर ली। एक राइटिंग पैड, ग्लोब राइटिंग पैड था, वो भी जब्त कर लिया क्योंकि उसके ऊपर भी ऐसा भगत सिंह की तस्वीर बनी हुई थी। और भगत सिंह के बारे में भगत सिंह जितेंद्र दास के बारे में एक ड्रामा उर्दू में लिखा गया, वो भी मिलता है। ऐसी ये सारी किताबें जो मैं देख पाया उनका कुछ नमूना है, लेकिन तो हर जगह हर प्रांत में हर भाषा वाले के सर्जन खुद करना चाहे तो मेरा ख्याल बहुत और भी दिख सकता है। एक शर्मा जी ने कहा था कि अज्ञात लिखा हुआ मिलता है, वो अज्ञात इसीलिए लिखते थे मुकदमे चल जाते थे, ये हो जाते थे लिखने वाले को, कलेक्टर को, पुलिस को, सभी को न कर देते थे। तो उसका एक तो तरीका यही था भी अज्ञात लिख दो तो पता न लगे। दूसरा ये था कि किताब का नाम ऐसा लिख दो जिससे पता न लगे भाई किसमें है क्या। और एक किताब का नाम है श्रृंगार रत्ना, नारी श्रृंगार रत्ना, देखेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर सारा भगत सिंह का है, तो वो भी बैन हो गई। मोतीलाल पट्टू तामल में, तो
नाम तो मोतीलाल जी का है ऊपर, तो अंदर सर भगत सिंह के गीत हैं, तो ANT का भी इस्तेमाल किया है। तो ऐसे तरीके किए गए, भगत सिंह के बारे में जो लिटरेचर लिखा उसको बचाने की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की नजर बड़ी पैनी थी, उन्होंने शुरा कर भी वो नोट्स लेते रहे और उसको बैन करते रहे। ऐसा इतना काम भगत सिंह के बारे में मैं कर सका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत थोड़ा है, इसमें बहुत और जोड़ा जा सकता है। हर कोई अपनी जगह काम करे तो उसको पूरा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं कहना चाहूँगा, भगत सिंह के बारे में जो मराठी में बैन किया गया फुआरे, वो मैंने इकट्ठे किए थे और NB में छापा है। मैं डॉक्टर साहब को पेश करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरुदेव सिंह जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वक्तव्य था। मैं अब आमंत्रित करता हूँ कि आनंद कुमार जी को। आप गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान गांधीग्राम तमिलनाडु में तमिल के प्रोफेसर हैं। आपको तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु तथा रूसी भाषाओं का भी ज्ञान है। तुलनात्मक साहित्य अनुवाद और साहित्यिक आलोचना पर आपको महारत हासिल है। 25 MPhil छात्रों का आपने निर्देशन किया है। आपको 32 कृतियाँ प्रकाशित हैं तथा तुलनात्मक साहित्य, अनुवाद तथा साहित्यिक समालोचना पर 95 शोध आलेख आपके प्रकाशित हैं। आपको वर्ष 2008 में यंत्रम मलयालम से तमिल के अनुवाद कार्य के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदरणीय P. आनंद कुमार। Respected Srinivasa Rao ji, the Secretary of Science Academy, and other writers and critics from all over India, very good evening to all. I came here, this Rabindra Bhavan, this is the second time. In 1985, when I was an MPhil student, I came here, the workshop on writing of history of Indian literature. That workshop was coordinated by the Professor C.C. Kumar Das. So after 37 years, I am here. So I am very much thankful to give this opportunity to me, the Sahitya Akademi Secretary. Once again, I convey my thanks. Let me start my article with the quotation of Mahotsav, which was published in India Tamil newspaper on 30th March 1907. Every year 60 crore rupees is swindled from here. This kind of so many injustices are there in this present British rule. To destroy this kind of injustices, God takes 10th avatar among us. The name of his avatar is Swadeshi. His weapon is boycott. His mantra is Vande Mataram. The rise of Indian nationalism is evoked and objectives of the century-old British colonial rule is questioned. Even though the Bengali Renaissance took a leading role in this matter, in Tamil Nadu, the freedom fighter V.O.S. Navratnalai's efforts for establishing a Swadeshi navigation company gave an awareness to the Tamil people cutting across cities, towns, villages and hamlets. And also the Tamil newspapers like Swadesamitran and India played a vital role in popularizing the awareness of Indian nationalism among the local and rural masses. The British government took control measures against this national and political awakening by the implementation of the Indian Press Act 1910, where the section 12/1 of this act empowered the local governments to issue warrants against any newspaper or any book which contains seditious matters. In Tamil Nadu, the poet and patriot Mahakavi Subramania Bharati was targeted first by this act. Poet Bharati wrote articles against the British government in the newspaper entitled India, Suryodayam and Swadesamitran. And also he exhibited
against British government in India newspaper. For example, the cartoon and explanation of the cartoon titled The Barking Dogs and Rising Sun. He metaphorically depicts rising sun as the awareness of freedom awareness, and barking dogs are the unsupported English channels like Madras Times, Pioneer and other channels. He depicted as barking dogs because they are against the Indian national freedom. This cartoon published in India newspaper on 17th August 1907 was objected by the British government. The articles written by Bharati in the India newspaper during the years 1907 to 1908 were also objected by the Britishers. The following articles written by Bharati was objected by the British government and action was taken against the India newspaper. 7 articles: reply to the Englishman government, the plunder, self-rule, a request to the Muslims, Italy and India, our prime duty. These 6 articles alleged by the British government, and they have summoned a warrant against the editor of the India newspaper. But unfortunately, the official editor was G. Subramania Iyer. Bharati was escaped and Subramania Iyer was arrested and he was in the jail. After that, Bharati wrote against the articles against the new press bill was introduced by Sir Herbert Risley. So, after the ban of India Tamil newspaper in Chennai, the India newspaper was shifted to Pondicherry in 1908. In Pondicherry also, Bharati continuously writing against British government. So, the W.S. Mayor, the Chief Secretary of the then government Madras Presidency, issued a notification order against India and Suryodaya newspaper on 18th March 1910 that these 2 Tamil newspapers are forfeited. By these notification orders, the office of the said newspapers were closed and sealed on 30th April 1910. After that, the continuous request to the governor of Madras Presidency by the editor of India to lift the ban was lifted by the government. And the India newspaper had its rebirth and was published from 2nd July 1910 from Pondicherry. But the articles were still written by Bharati on Shivaji and their courage, angered the British government, and once again the government banned India newspaper published from Pondicherry on August 1910. The Mandal Tirunelveli collector Ash by Vandinathan was turned against Bharati. It was argued that the literary texts written by Bharati were the cause for Vandinathan's extremist activities. Hence the poem Kanavu, Dream and the short story Aarul Pangu were banned by the British government. The following notification order was published by H.A. Stewart, Chief Secretary in the 4th Chenchar Gazette notification on 11th October 1911 as follows. Whereas 2 Tamil pamphlets specified below, printed and published at Pondicherry, contain matter which, in the opinion of the governing council, has a tendency to excite disaffection towards the government and is therefore of the nature described in section 4, subsection 1 of the Indian Press Act 1910. The governor in council, in exercise of the powers conferred by section 12, subsection 1 of Press Act, declares that all copies of the publications are forfeited to His Majesty. Kanavu, a poem, and other songs by C.S. Bharati. Aarul Pangu, a story by C.S. Bharati. Kanavu is an autobiographical poem which depicts Bharati's childhood days. In this poem, he attacked English education and English education institutions and picturizes Britishers as Puna kings. Further, he alleged that British government is the cause of his father's death and the ginning factory loss
and the poverty of his father. All would tell the story that have a message that not only brahmacharis, the family men can also participate in the freedom movement and freedom struggle. Bharati was emancipated by the great Indian freedom fighter Tilak. He considered Tilak as his guru. He wrote many poems on Tilak. At last, he was arrested in Kadalur in 1980, and more than 21 days he was in the jail. After Bharati, Gandhi writers emerged in Tamil Nadu. Many folk singers were attracted by Mahatma Gandhi. They glorify Mahatma in their songs. In the year 1930, the Hindi Prachar Sabha of Chennai published a pamphlet entitled Gandhi Ki Jai, written by V. A. Sundaram. In this pamphlet, Gandhi was praised and portrayed by the author for his efforts against British government. Moreover, he described England as big-headed. Further, he gave a clarion call to the public to participate in the Salt Satyagraha. The book was declared as a banned book under Section 99A of the CPC of 1819 on 9th June 1930. Madurai city, my city, has many freedom fighters, particularly folk singers, who propagated nationalism and awareness of Indian freedom. In this regard, poets S.S. Vishwanatha Das and Madhura Bhaskara Das are noteworthy. Their songs were sung by drama actors. Vishwanatha Das published a collection of songs entitled Deshabhakta Geetam in the year 1931. He described the Britishers as cruel white cranes. Further, he glorified Mahatma Gandhi as God Rama and Lord Subramania. This book was also banned by the British government. Madhurakavi Bhaskara Das wrote 2 volumes on Indian freedom fighters entitled Hindu Deshabhimanigal. In these 2 pamphlets, he praised Mahatma Gandhi, Vivekananda, Lala Lajpati Rai, Dadabhai Nauroji, Lokmanya Tilak, Rabindra Tagore, Ali Brothers, Yaqub Hasan, Nehruji, Ras Bihari Bose, Siddhartha Das, Rajaji, Dayananda Saraswati, Parado Maharaj, and other prominent freedom fighters in India. Bhaskara Das published a collection of songs on Mahatma Gandhi entitled Gandhi Part 2. He praised Mahatma as Kali Yuga Avada. This pamphlet was also banned by British government in the year 1932. Likewise, Mahatma Gandhi Kirtana Amritam, written by V. Nadaraja Pillai, Pandit Motilal Nehru Geetam was published by V. R. Elumalai were also banned by British government in the same year. During this period, some pamphlets on the father of nation were published from Sri Lanka upcountry, cities like Hutton and Kanti. These were also banned by the British government because at that time Sri Lanka was controlled by the Madras Presidency. All of us know. Finally, we should mention the great freedom fighter who emerged from Madurai city, Mayami Bharati, whose writings gave a load to already existing literature. He wrote an article entitled Porukku Tayar, Ready to War, in Lokashakti journal on 1st October 1939. For publishing this article, the journal was fined a sum of rupees 750. But due to the non-payment of fine, this journal was stopped. Then Mayami Bharati started a new journal, Bharat Shakti, with the help of his friends. In this journal, he wrote 2 articles against British government, namely Padugalathi Bharat Devi, Mother Bharat in the war field, Company Kalakya Kattapoman who astonishing the East India Company. For publishing these articles, Mayami Bharati was arrested by British government. So this area is very enrichment area. I think more than 100 pamphlets and books were published against the British government, and they are all banned. So I once again thank you all, particularly to the Sahitya Akademi Secretary. Thank you. मैं अब उसकी फैसिलिटी नवीन जी को आमंत्रित करता हूँ। आपने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ निकेतन से किया। आपने साहित्य प्रजा साहित्य के संपादक के रूप में कार्य किया।
आपने तेलुगु साहित्य पर विशेष रूप से कहानियों और साहित्यिक आलोचना पर कई लेख लिखे हैं। आपने तेलंगाना पुराटा कथालू और तेलुगु कथा 65 से 85 नाम से कहानी संकलनों का संपादन किया है। 1990 से आप कथा नाम से तेलुगु कहानियों के वार्षिक संकलन का संपादन कर रहे हैं। इस संकलन के प्रकाशन का ये 32वां वर्ष है। आपने साहित्य अकादमी तथा कई अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में तेलुगु कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि पर आलेख प्रस्तुत किए हैं। आपने तेलुगु साहित्य पर व्याख्यान देने तथा आलेख प्रस्तुत करने के लिए यूएसए, यूके आदि देशों का सांस्कृतिक दौरा भी किया है। आपको गुंटूर के वर्टीकोंडा विशालाक्षी पुरस्कार, श्रीकाकुलम के जगन्नाथ पुरस्कार और हैदराबाद के विश्वकला पीठम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथा कालम नाम से आपका एक निबंध संकलन प्रकाशित है। श्री वाशी रेड्डी नवीन जी। Thank you, Kumar. I thank Srinivasa Garu for inviting me to this fruitful seminar on Indian literature banned by the Britishers. And also I thank Siva Reddy Garu, who is our convener for Telugu board, for nominating me to participate in this seminar. I am presenting my paper with little pain today because on this particular topic, because one of our fellow writers is struggling for life by the attacks. Anyway, I go into the topic. The drop of blood shed for the freedom of one's country is the most precious gem in the world. Is the answer in the story written by Munshi Premchand in his Duniya ke sabse anmol ratan for a question, what is the priceless jewel in the world? This everybody knows about it, and especially our Sharmaji also told about the story in detail. So don't these words profile against the colonial rule? And don't these words trigger the sentiments of the people against the British rule? So hence the British government is quick enough to ban the book Soje Watan, an anthology of short stories which includes this story also. It was banned in 1909, and officials were confiscated and burnt 500 copies which were unsold by them. Probably this was the first short story anthology in India to ban. And this imposing restrictions on literature and cultural events in India started way back early 1861, starting with Bengali drama Neel Darpan. And it continued. Several books and songs like Vande Mataram were also banned, as everybody knows. And as our friend Tamil Anand Kumar told, in 1911, Bharati's short story Aril Orupangu is also banned. So the banning of books continued like that. The banning of books by the British can be broadly categorized into 3 types. One is to ban the literature that expressed and espouses the feelings of independence. It started in Telugu with banning of editorial in Swarajya. Swarajya is a Telugu magazine published by Gadicharla Sarvottam Rao. In those days, he was the editor also. Sarvottam Rao was incarcerated for 3 years for writing an editorial in Swarajya. It was in 1911. Then it went on to ban some songs and plays. Small plays and harikathas also banned. In this connection, one should remember the name is a great name, Damaradu Pundarikakshudu. It was very unknown to the other languages, but he played an important key role in propagating the ideology and the importance of the struggle for freedom movement. Damaradu Pundarikakshudu. He inspired the people with his
poems as well as short plays as well as harikathas and different forms of different cultural forms. So whatever he wrote, it was banned by the British. See, he wrote and staged a play in the backdrop of Jallianwala Bagh. To write this story, to write this play, he went to Jallianwala Bagh and toured around those areas, and he came back and wrote a small play, and he was enacting that play. Immediately, within 2 months, I think, in 1920, it was banned. Again, as everybody says in every language, it is the same way. Just the name is changed as Panchala Parabhav. Same, the original name was Punjabi, the original name is Punjab Durantam. Punjab Durantam is the drama he wrote and enacted it. Then afterwards, after banning that, he changed the name of the same play as Panchala Parabhav, a Mahabharata story, and enacted it again. Again it was banned within 2 months. Then he wrote a small play, Gandhi Mahodsav. It was banned. Again he changed its name as Dandi Satyagraham. It was again banned. So this way he wrote about half a dozen or more than that. Quit India, Gandhi, Vijayadhwajam. All these were promptly banned by the government between 1920 and 25. He was go on writing. He went 2-3 times to jail, came back, started writing another one, went to jail and came back. The same way, continued like that till 25. Swarajya Sahasam, an unpublished play, was also banned. Nobody knows who wrote that unpublished play. Kodala Anjaneyu, he wrote a play by name Tilak Maharaja and a Harikatha by Kaliyuga Prahlada. This is not Prahlada, this is nothing to do with Prahlada. This is about the Kaliyuga Prahlada, Gandhi may be Kaliyuga Prahlada in that particular play. Was also proscribed in these years for writing and singing a song. A big name, we Telugus are proud about him, is Garimella Satyanarayana, who wrote a single poem. Nothing more than that. He wrote other poems also, but the particular poem, Makuddi Teladavatam, we don't want his white rule, is a poem written by him, is immediately banned. And he was singing it. Though it was banned, he go to the villages and singing it himself. This is a very long poem, 160-line poem. It was translated by Tamuduri Prakasam Pantul Garu and Gandhiji and published it in Swarajya magazine. Gandhiji suggested that it should be translated into the all Indian languages. I don't know whether it is translated or not, but Gandhiji suggested from when he was in Wardha. And his, along with this poem written by Garimella, other poems was also banned in 1922. There is one more book called Swapna Prayana. It's a dream of Swapna Prayana, dreaming about the freedom. Is proscribed by the British government, but though it was written by Dipala Pichai Sastri, as in every language again, it was published by somebody else. The publisher was caught and put in jail. The publisher's name was, he was in Nelluru, Venkat Ramanaidu, who was the publisher. He went into jail on behalf of Pichai Sastri, Dipala Pichai Sastri. In the same way, a play named as Chichara Pidugu. Chichara Pidugu means it's a colloquial word. I don't know how to translate it. You can call it as a warrior or a old man, something like that. It was a play published in 1921, basing on Mangal Pandey. This Chichara Pidugu is Mangal Pandey. Basing on Mangal Pandey's life, he wrote and published, and it was banned in 1921. Though written by R. Venkatappa, the editor Annapurnaya was imprisoned for that.
Because though Annapurnaya was questioned several times, he never really revealed the name of the original author. So the publisher was arrested and put in jail. And the same way, and there is another important literary event in Telugu literature is Unnava Lakshminarayana's Malapalli. It's about 800 pages novel. When Unnava Lakshminarayana was in jail for his anti-British activities, he wrote that novel in 1921, between 21 and 22. He smuggled the novel from the jail to outside, and it was published in 1922. Immediately it was banned in 23. Not even second part was published. First part itself is banned. Next, afterwards, in the court hearings and all those things, 25 finally the ban was lifted. Again in 26, both the parts were banned. So this ban and the novel was also is a great sensation in those days. This novel is being reprinted several times, even to this date. It is there available in bookstands. Though Telangana now is a separate state, but it was ruled by Nizam in those days. Though Telangana was ruled by Nizam, he followed the British as far as the interdiction of books is concerned. The book like Savarkar Jeevit Charitra and Veldurti Manikya Rao's Raitu means a farmer, was published from Anagandhamala, established by K.C. Gupta, outlawed in 1940. It is surprising and ridiculous that Nizam's government thought a 30-page book, Raitu, will bring in rebellion. That's why they banned. And further, the unusual thing is the ban order was signed by none other than Nizam himself. It was very unusual. And it is an important thing is K.C. Gupta, he was the publisher. They published around 30 books. Each book, why it is named as Anagandhamala is each book is one anna in those days. They used to publish book for 30-40 pages only. They used to sell it for one anna. And interesting thing is, in his autobiography, he wrote that he has one friend running a coffee shop or a small hotel. There they board, and the board it is written like this: Idli, 1 anna, Puri, 1 anna, Vada, 1 anna, one book, 1 anna. It is written like that, and the name board of the hotel. So they propagated the books like that. Around half a dozen of the books after the 20 were banned in those days. So the spree of the proscription of this peak was during non-cooperation movement. The second category is to ban the books are written in the background of the communist ideology. So while Gandhi was leading the non-cooperation movement on one hand, Sripad Amrit Gange, Singaru from Maharashtra, Marathi, Singaru Chetty from Madras area, and Muzaffar Ahmad from Bengal area were organizing people in different parts of the country. In 1925, these scattered groups got united to form the Communist Party of India. So the influence of the Communist Party of India in Telugu-speaking areas was immense. Unnava Lakshminarayana, as I said previously in his novel Malapalli, mentioned about the Russian Revolution in his novel, Revolution in his novel. It was around 800 pages novel. Out of 800 pages, he devoted around 20 pages to describe about the Russian Revolution in that Malapalli novel. That was the influence of the Communist Party in those days, even in 20s and 30s. And Krovidi Lingarazu, another important writer, he translated only one novel. Krovidi Lingarazu, while he was in jail for his anti-British activities, read Maxim Gorky's Mother and translated it into Telugu. It was published by Adarsa Grandhamandali in 1934 and was promptly banned in 1935 itself. Even today, it is being sold several thousands and thousands of copies. It was translated by him only. As it is, the Russians, when they have translated it into Telugu, they took this translation as the authentic translation. And
Adarsa Grantha Mandali, it was since then till 1947, for that matter even afterwards also banning of literature continued. I should say one more important village name, it is called Munganda, a small teeny village in West Godavari district of Andhra Pradesh. Prominent Telugu writer Mahidar Rammohan Rao and his brothers formed a Visya Sahitya Mala and published about 85 books. Out of most of them are translations. All are propagating communist ideology. Out of that, around half a dozen books were banned. One of that is Karl Marx, Preachings of Karl Marx, Russian Revolution, Coolie, Capital and Socialism were among those banned books. This ban continued from 1937 to 42. They were all translations. These books were widely distributed all over Andhra region through numerous modes of transport. Though these books are banned, they were somehow or other they used to sell the books by going by walk to the village or by sending the books through water transport. Somehow or other they used to sell the books. And finally, Mahidar Krishna Mohan Rao, who translated these books, had to undergo jail for 1 year. Gadde Lingaya established, as I said, Adarsa Grantha Mandali. He published Gorki. He also published a book known as Viplava Yugam. It depicts the life histories of the Indian terrorists, quote unquote terrorists. So the lives of the terrorists, that was banned actually. In 1937 it was banned. Telangana armed struggle against the misrule of Nizam under the leadership of the Communist Party of India is a unique moment in the history of the country. The armed struggle continued even after the Nizam came in. Mundadugu, a drama by Sunkara and Vasireddy, was banned in 1946 by British as well as by the Nizam governments. A novel by Lakshmikanta Mohan, Simhagarjana, was also outlawed in 1947 by British government. Interestingly, an art form is also banned. In the form of Burrakatha is a type of ballad. People used to, it's a very free people performance. So it is easy for them everywhere they go and that's why they banned the form itself. The Burrakatha is banned in both Telangana state and in by the British government in Andhra Pradesh. A Payam by name, a Urdu journal. Payam, a Urdu journal was also attracted proscription. And another journal, Mizan, was closed in the face of severe repression. Though it is not banned, it is closed. During this period, mostly literature with communist ideology got banned. Finally, 2 minutes ago. The ban on moral grounds. There was also a ban in moral grounds. After the First World War of Independence, 1857, the British government kept away from it, interfering in religious and social customs and traditions of India and its people. It also decided not to meddle with moral issues. However, some of the books, they felt that they dealt with the moral issues also banned. One of such books is, as everybody knows, it is Radhika Santwanam. It was translated into English. It was widely published in every language, almost 3 or 4 languages. It got translated and published. Radhika Santwanam was written by Muddupadani in 1757 and 1763. She was a Devadasi and a musician in the court of Pratap Singh of Tanjavur court. But 1910, Bengaluru Nagaratnama, a dion of music, she collected the book. And actually that book was collected by C.P. Brown and it was in the National Archives or British Museum, wherever it is, it was there. And she collected the book and 1910 it was published. Immediately on 1910, as it is blasphemous and it involved in romance with the god. The story is like between Iladevi, Radha and Lord Krishna. The story between these 3 people. That's why immediately they banned it. But unfortunately the thing is, ironically a modernist and a social reformer, Kandumuri Veereswaringam, we always
praise him for his social reform. He himself asked for the proscription of this book, demanded for the proscription of this book, because of the some sort of what he felt was it was wrong. Pleaded for the proscription. Bengaluru Nagaratnam, I vehemently resented the attitude of Kandukuri in this aspect. This book was banned by the British, as I said, in 1911, which was revoked in 1947 after Tandukuri Prakasam became the Chief Minister of Madras. There is another book also like this banned. It is called Santa Saragadara by Cherikala Channareddy in Kadapa. Like that, there are some other moral issues, moral grounds, some books were also banned. As our Prabhavarma told, in Gerald Barrier book, it is written as Dravidian books, not even language-wise also written there. It is as Dravidian books banned is 57, but only in Telugu around 50 to 70 books were banned. So till now there is no proper documentation of the banned books in India. It is a time at the 75th year of the independence. It is the time for us to look into it and try to bring out a comprehensive anthology of the banned books and the information about the banned books. I conclude my presentation with Rabindra Tagore's poem, where the mind is without fear and the head is held high, everybody knows it, and where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into the heaven of freedom. My Father, let my country awake, let my country awake. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नवीन जी, बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपका। मैं इससे पहले कि डॉक्टर रक्षंदा जलील जी को आमंत्रित करूं, मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे अनुरोध के साथ आपका अभिनंदन करें। डॉक्टर रक्षंदा जलील एक बहुपुरस्कृत अनुवादक, लेखिका और साहित्यिक इतिहासकार हैं। आपकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा आपने 50 से अधिक अकादमी आलेख और प्रबंध लिखे हैं। आपकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं: लाइट इन प्रोग्रेस, लविंग चेंज, हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट इन उर्दू, द बायोग्राफी ऑफ उर्दू फेमिनिस्ट राइटर डॉक्टर रसीद जहां, एनिमल एंड हरकाज। आप हिंदी और उर्दू साहित्य तथा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित हिंदुस्तानी आवाज नामक एक संगठन का संचालन भी करती है। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रक्षंदा जलील जी। Great honor and privilege to be asked to speak here. At the same time, I'm acutely conscious that with the last speaker, everybody's patience is running, and I think everybody wants a cup of tea now. So at the risk of sounding superficial and tried, I will try and keep my presentation very, very short. I've been listed as an Urdu speaker. I of course access and interpret and analyze Urdu sources and texts, but my work is all in English. So my presentation today also will be in English. Essentially, I will be drawing on work I had done in 2010. 2010 में मुझे मौका मिला था लगभग 5 हफ्ते ब्रिटिश लाइब्रेरी में गुजारने का। ये वो समय था जब मैं किताब पे काम कर रही थी, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट इन उर्दू। तो मेरी दिलचस्पी ये थी ये समझने के लिए कि किस हद तक पैनी नज़र रखी जा रही थी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट की, लेकिन साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई और जो चीज़ें थी, प्रिस्क्रिप्शन, बैनिंग, क्या इम्पल्सेस हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट की आवाज़ों को दबाने की, तो उन सब चीज़ों पे भी देखने समझने का मौका मिला। और ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक ज़ख़ीरा था, एक ट्रेजर हाउस था मटेरियल का, जिसको अलग अलग तरह से मैंने इंटरप्रेट एनालाइज किया। आपने शर्मा जी उसका जिक्र किया और लोगों ने इसका जिक्र किया। वहाँ एक अथाह सागर है जो हम हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, पाउंड और इंडिया की इक्विवेलेंस इतनी ख़राब है कि आप ज़ेरॉक्स करते समय भी झिझकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ज़ेरॉक्स करके ले जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के आप नोट्स बनाते हैं, बाकी चीज़ें आपके जहन में महफूज रहती हैं। मैं शुरू अपनी बात करना चाहूँगी, एक कैटलॉग है बहुत बड़ा, जो उसका एक फॉरवर्ड है। उससे मुझे लगता है कि आज के सेमिनार का एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ निकल के आता है। पीसी ब्लूमफेल्ड हैं जो उस कैटलॉग का फॉरवर्ड लिख रहे हैं।
वो ये कहते हैं, the British normally banned publications for two main purposes. First, they promoted criticism of the British government, and second, those that promoted religious and or racial strife. The prescription of publications for moral or sexual reasons seems to almost never have been the case. लेकिन आपने हमें अभी बताया कि Telugu is an exception. And I take note of the fact that Varmaji, as you had said, that while Barrier's book is excellent in many respects, and for someone like me who was largely looking at Urdu and Hindi prescribed texts, I found it useful. But yes, it did not have a pan-Indian reach, and the fact that it clubs languages is evident, deeply offensive, and the fact that it did not find it necessary to go into those languages. I take that point into it. Now, this catalogue that I referred to, it reveals how, taken together, the books, pamphlets, periodicals, newspapers, handbills and posters in all the major Indian languages prescribed by the British government in India provide an invaluable printed archive. हम यहाँ तक कह सकते हैं कि ये एक तरह से नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का आर्काइव है कि जो चीज़ें वहाँ जमा हैं, जिन चीज़ों पे हम नज़र डाल सकते हैं, जब हम उनको एकजुट देखते हैं, तो वो हमें एक तरह का फ्रीडम स्ट्रगल का ही आर्काइव मालूम होता है, क्योंकि वो सारे स्ट्रैंड्स, वो सारे रीजंस, वो सारे वजूहात जिसकी वजह से वो टेक्स्ट, वो पोस्टर्स, वो हैंडल्स, वो पिक्चर्स, जैसा कि सिद्धू जी आपने जिक्र किया, वो बैन हुई थी, वो कहीं ना कहीं आपके नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ती हैं। और वो सारी चीज़ें जो नेशनलिज्म से जुड़ी हुई थी, उसमें नेशनलिज्म तो था ही, लेकिन एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी फाशिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं फेमिनिज्म, लैंड अबॉलिशन, जमींदारी, ये सब चीज़ें भी होती हैं जो सब आके जुड़ जाती हैं सीमलेस तरीके से नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से। हमें वो सब चीज़ें इस बैंड लिटरेचर के आर्काइव में। The collection at the British Library constitutes perhaps the largest accumulation of primary literature and ephemera relating to the Indian independence movement. There are similar but smaller collections in the library and files of the more political proceedings of the National Archives of India and the state archives, especially the ones in Kolkata. मैं फिर उस कैटलॉग से कोट करती हूँ छोटी सी चीज़। From the establishment of a commercial publishing and newspaper industry in the 1780s up to the mutiny of 1857, the British authorities in India fluctuated between tightening or loosening their powers, restricting the production of books and newspapers. By the turn of the century, the two main categories of proscribed publications had been established. Criticism of the British colonial government, coupled with increasing demands for self-government and expressions of communal conflict fueled by intersectarian and interreligious controversy. मेरी प्राइमरी इंटरेस्ट तो उर्दू लिटरेचर में था जब मैं ये चीज़ें देख रही थी, लेकिन नज़र पड़ती थी और भाषाओं में क्या हो रहा था। इसका एक संदर्भ और है, हमें शायद वो भी समझने की ज़रूरत है और कुछ लोगों ने उसकी तरफ इशारा भी किया है। इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 ये एक तरह का सरकार के लिए बहुत बड़ा टूल बन गया, एक तरह का एलाय बन गया in dealing with the increasing amounts of seditious literature being made available, be it homegrown or produced abroad. यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि बहुत सा लिटरेचर उस वक्त 1919 के बाद से ताशकंद से आ रहा था, जो आउटराइट कम्युनिस्ट लिटरेचर था। ताशकंद में एक बहुत बड़ा ट्रांसलेटर्स ब्यूरो है जो हिंदुस्तान को फ्लड कर रहा है, चीपली प्रोड्यूस्ड, मास प्रोड्यूस्ड, इनएक्सपेंसिवली प्राइस्ड पैम्फलेट्स, बुकलेट्स। वो कम्युनिस्ट लिटरेचर है एक लिहाज से, कुछ तो टेक्स्ट हैं जो कम्युनिस्ट टेक्स्ट हैं, लेकिन कुछ कम्युनिज्म, सोशलिज्म से इंस्पायर्ड टेक्स्ट हैं, और ये मराठी, गुजराती, हिंदी सब भाषाओं में हैं, और ये बहुत ही कम दाम पे, खास तौर से उन जगहों पे जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद, अलीगढ़, कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं या छात्र हैं बड़ी तादाद में, खास तौर से उन जगहों पे इनको हमें नज़र आता है। तो ये फिर उठा लिए जाते हैं स्टडी सर्कल्स के लिए और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि भले ही ये कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड लिटरेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टाँका जाके जुड़ता है नेशनलिज्म से, कहीं ना कहीं ये जाके बात वही करते हैं जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बड़े नैरेटिव में बात होती है। Usually, the great bulk of literature banned by the British dealt with criticism of British presence in
India, its policies, activities, लेकिन साथ ही साथ और चीज़ें भी इस ताने बाने में जुड़ जाती हैं, जैसे कि नेटिव प्रिंसेस की अगर कोई भी बुराई की जा रही है तो अक्सर वो भी बैन हो जाता था। वेस्टर्न कल्चर की अगर कोई बात हो रही है, कलोनियलिज्म के खिलाफ कोई बात हो रही है, वो भी जाके इसमें बैन हो जाता था। कुछ राइटर्स पे खासतौर से नजर रखी जाती थी और उनको बैन करने की कोशिश की जाती थी, जैसे कि एनी बेसेंट, और इनकी राइटिंग्स हम देखते हैं उर्दू के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एनी बेसेंट, W.S. डंट के अंग्रेजी के पॉलिटिकल एसेज थे, उनकी चीज़ें हमें उर्दू में बहुत तादाद में मिलती हैं। ये हिंदी, मराठी, गुजराती और ज़बानों में भी ये चीज़ें जो कि आउटराइट ना कि कम्युनिस्ट हैं बल्कि ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, तो ये चीज़ें भी बैनिंग या सेंसरशिप की नज़र में आ रही हैं। साथ ही साथ आयरलैंड में और इजिप्ट में जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ है उस पर भी नज़र रखी जा रही है, और इसको रखने के दो तरीके हैं, एक तो आउटराइट बैनिंग और एक वो कि जो पोर्ट्स हैं, जो एंट्री पॉइंट हैं जहाँ से लोग हिंदुस्तान में एंटर कर रहे हैं, वो अपने साथ क्या चीज़ें ला रहे हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कराची, बॉम्बे ऐसे जो बड़े पोर्ट्स हैं, उस ज़माने में एयर ट्रैवल नहीं था, शिप से लोग आते थे, इन पोर्ट्स में लोगों के सामान खोल के देखे जाते थे। कुछ लोग ऑलरेडी एक तरह की, जिसको आजकल रेड कॉर्न अलर्ट कहते हैं, उस ज़माने में कोई और उसकी वर्ड था, कि उन पर नज़र रखी जा रही थी कि अच्छा ये फलाना एक नोन कम्युनिस्ट है, तो वो आ रहा है तो अपने साथ क्या चीज़ें ला रहे हैं। सो जो चीज़ें बैन नहीं भी होती थी लेकिन जिनकी एंट्री इंडिया में प्रोहिबिट की जा रही होती थी, वो भी पोर्ट्स के ज़रिए और एम्बार्केशन पॉइंट्स के ज़रिए उस पर नज़र रखी जाती थी। एक दुविधा थी, हम कह सकते हैं, एक डिलेमा था colonial mind में, waffling between eclectic traditions back home that favored a free and frank air in the public opinion and a colonial mindset that was anxious to quell the slightest stirring of discord. Imperial prescription policies were remarkable for their ambivalence. यानी ये समझना जरूरी है कि जो चीज़ें वो अपने मुल्क में बहुत प्राउडली फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह बात करते थे, वही चीज़ें इंडिया में आके या किसी भी पार्ट ऑफ एम्पायर में आके उसको लेके एक एम्बिवलेंस आ जाता था। The non-cooperation movement mounted in response to the Rowlatt Act led to the first mass circulation of collections of nationalist poetry. Many of these were banned and copies were preserved in the London collections. Another category of prescription at the time was literature expressing support for the Khilafat movement and Pan-Islamism. ये दो धाराएं हैं जो हम एक हाई मूड देखते हैं जलियांवाला बाग के फौरन बाद, जो एक पैन-इस्लामिज्म की बात होती है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, ये दो धाराएं हैं जो जुड़ जाती हैं जलियांवाला बाग के फौरन बाद। The tragedy of Jallianwala Bagh probably evoked more anti-British poetry than any other single incident except the execution of Bhagat Singh, जिसकी तरफ सिद्धू जी आपने इशारा किया। Who and according to the catalogue that I've been referring to of prescribed literature, poetry on and about Bhagat Singh rivaled Gandhi in popular literature as the embodiment of the freedom struggle. The resurgence of non-cooperation and the growth of revolutionary activity in the 1930s led to renewed mass circulation of nationalist poetry. Now it's a bit like wild grass. The numbers were so large that आपने 30, 40, 50 प्रिस्क्राइब भी की, बैन भी की, तो उतनी ही तादाद में और लिखी जाती थी। उनको लिखने वालों के अक्सर नाम नहीं होते थे, या अगर नाम होते भी थे, जैसा कि बार-बार इशारा किया गया है कि उनके नाम बदल दिए जाते थे, तो very clever form of mimicry, of camouflage was used. Just change the title. 2-3 महीने में अंग्रेजों को समझ में आ जाता था कि वही किताब है दूसरे टाइटल में, वो बैन हो जाती थी, लेकिन उससे मिलती जुलती या उसी लगभग उसी थीम पे फिर कोई किताब लिखी जाती थी। तो ये एक प्रोसेस था कि आप जितनी बैन कर रहे हैं उससे ज़्यादा छप रही है। So the demand and supply was entirely in favor of surplus circulation. Reeling under the Khilafat movement and the non-cooperation agitation, the government decided to adopt a twin-pronged approach, and this was two things: coercion and conciliation.
while banning, censorship and imprisonment were tested ways of retaining political control, another strategy was cultivating allies and conciliating political and religious leaders. एक चीज़ और भी है कि अब मैं उर्दू पे खास तौर से बात करती हूँ. Another strategy, especially in the case of native newspapers, was the imperial policy of prescription. Often, instead of an outright ban, the government chose to forfeit securities. Now, according to the Vernacular Press Act, any vernacular newspaper in any language, the editor, proprietor, owner had to put in a certain amount as a security. So, one way of putting pressure on the owner of the vernacular newspaper was to forfeit that security. जो छोटे newspapers होते थे, उनके लिए 1000 रुपए की security भी बहुत मायने रखती थी. जो बड़े newspapers होते थे, they would wear it as a badge of courage. ऐसे देखिए, हमें 10,000 रुपए मांगे security के, हमें दे दिए, but we are continuing. And in some cases, the more popular vernacular newspaper, and we find this in the case of Zamindar in Urdu, a newspaper that came out from Lahore, which had a huge subscription. So there, people were willing to pitch in to make sure that the newspaper stays afloat and manages to give that security. The interesting thing I want to point out here, I know I have very little time, is that this is an age, the 30s and the 40s is a time to मुल्क के बड़े से बड़े लिखने वाले, मुल्क के बड़े से बड़े शायर अखबार चला रहे हैं. आज जो हमें एक डाइवोर्स, एक स्प्लिट, एक डिस्टेंस देखते हैं जर्नलिज्म और लिटरेचर के बीच में, ये उस वक्त नहीं है. We have people like Hasrat Mohani editing Urdu and Walla. We have Maulana Muhammad Ali Jawhar, एक नहीं दो अखबार निकालते हैं, Amrit and Amrit. We have Maulana Abul Kalam Azad's Al-Hilal. We have Maulana Zafar Ali Khan's very popular Zamindar. And I can go on. There is Chirag Hasan Hasrat, there is Faiz Ahmad Faiz, even till post-47 editing Pakistan Times. So this cleavage that today we see between journalism and popular literature is not there. मैं कुछ चीज़ें skip करती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कम है. Against this background, let us look at Urdu, and in particular मैं 4 किताबों के हवाले से बात करना चाहती हूँ. वक्त नहीं होगा कि मैं उनकी तफसील में जा पाऊँ. I just want to flag them. One is Azadi की नज़में. This is published in 1940 by Sahitya. इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत पीछे तक बात को लेके जाती है. ये 1857 से बात को शुरू करती है और 1857 के लिए तो burst of political energy that comes out from 1857 and that translates itself into very political poetry. Much of it gets banned. ये उसका भी जिक्र है. The second book is ज़ब्त शुदा नज़में. इसमें हमें हमेशा नहीं मालूम कि लिखने वाले कौन हैं because many of them are underground. So we don't quite know who those people are. ये बात अलग-अलग languages के हवाले से आज हमने सुनी है. ज़ब्त शुदा नज़में 40s में आई थी, उसके बाद वो गायब हो गई और सिर्फ लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में मिलती थी. लेकिन कुछ साल पहले 75 अली मंजूर में मुश्तबा हुसैन ने उर्दू की जो ज़ब्त शुदा नज़में थी उसको छापा है और ये अपने आप में बहुत अहम किताब है. यहाँ से छपी है. फिर एक तीसरी किताब है अशोक कुमार पार्टी की नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में. इसका नाम है अशोक. अशोक refers to a tradition that goes back to Urdu poetry. शहर अशोक कहते थे उसे. Literally means lament of the city. और वो थोड़ी सी वो थोड़ी सी दरीली, थोड़ी सी सहरीली, थोड़ी सी चेस्ट बीटिंग टाइप की पोएट्री होती थी. इसमें ये होता था कि हाय हम पे ये विपदा आ गई है, सरकार ने हम पे ये कर दिया है. तो उसमें एक रोबस्टनेस नहीं थी शहर अशोक. लेकिन राजेश कुमार पाठी का जो अशोक कलेक्शन है जिसका पूरा नाम है नेशनल आर्काइव्स में महफूज ज़ब्त शुदा अदबियात से इंतखाब. तो इसमें जो इंतखाब है, इसमें जो सिलेक्शन है, इसमें एक हमें पॉलिटिकल टोन भी दिखती है. और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस शायरी में जो एक ट्रेडिशनल मेटाफर्स मीडियम एक वोकैबुलरी थी उर्दू शायरी की, उसका रेडिकलाइजेशन, उसकी पॉलिटिकलाइजेशन हमको नजर आती है. बिलवड के लिए, महबूब या महबूबा के लिए, सितमगर, बुत, काफिर, यार, ये लफ्ज़ आज से निकल के 17th सेंचुरी से इस्तेमाल हो रहे हैं क्लासिकल उर्दू पोएट्री.
suddenly in these collections we see how in a very tongue-in-cheek fashion, in a very political fashion, these are being used mockingly for the British. And this is something that latter day political poets, आज जब जावेद अख्तर लिखते हैं या फैज लिखते हैं बोल दिला आजाद लिखते हैं, तो ये सब इस ट्रेडिशन पे बिल्ड कर रहे हैं और हमें क्रोनोलॉजिकल तरीके से ये चीजें नाउ आई वांट टू 2 मिनट मैं बहुत ब्रीफली एक किताब का जिक्र करना चाहती हूँ कि एक माइलस्टोन एक संकेत माना जाता है जब भी हम रैडिकल लिटरेचर की बात करते हैं उर्दू में। ये है अंगारे, 1932 दिसंबर में ये छपी है और 3 महीने बाद मार्च 1933 में ये बैन हो जाती है। इसकी खासियत प्योरली लिटरेरी टर्म्स ये भी है कि ये अपने आप की पहली एंथोलॉजी है। इससे पहले एक लेखक की किताबें एक जिल्द में एक होता है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हम पहली दफा उर्दू में देखते हैं जहाँ 3 मर्द और एक औरत सजाद ज़हीर, अहमद अली, अमृत सफ़र, डॉक्टर रशीद जहाँ, ये 4 लोग मिलके 9 कहानियाँ और एक प्ले। लिटरेरी कमेंटेटर्स और क्रिटिक्स का ये कहना है कि अपने आप में हाई लिटरेचर नहीं है और इसकी लिटरेरी मेरिट स्लिम है। मेरा ये मानना है कि हम अगर इसकी लिटरेरी मेरिट में ना जाएं, हम ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे की इम्पल्स क्या थी, तब शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि इसके पीछे इतना ज़्यादा बवाल क्यों हुआ और क्यों इसको बैन करने की ज़रूरत समझी गई। Now, it was thought to ridicule the Prophet and several rituals, customs and practices that were dear to Muslims. Proscribed shortly after publication, it however gave people no time to form an opinion on their own. Most of those who most vociferously condemned the blasphemous book had not read it. Yet public perception was so obviously banned against the book and its authors that the verdict was influenced by popular perception rather than an informed reading of the text. The colonial government, responding to a knee-jerk reaction from a section of Muslims, imposed a ban in what they considered the larger good of the community. The voice of the strident illiberals. Now this is not my coinage. Strident illiberals is a word that Nehru uses, not in the case of Angare, but in some other political context. But I like the word because in the context of banning, almost always it is the strident illiberals who manage to have their say. So they drowned out the saner voices of the liberal secular Muslims who, though a largely silent minority, could not be ruled out as being of no consequence. That a ban fueled paranoia and played into the hands of a relatively small section of hardliners was a truism that eluded the British government in India. It is significant to note that Angare was reprinted in Urdu as late as 1995. Khalid Alvi ने इसको उर्दू और देवनागरी में छापा और अब ये फ्रीली अवेलेबल है और इसके 2 इंग्लिश के ट्रांसलेशंस भी आ चुके हैं। The overtly sexual references and the attacks on religion draw away from the purpose of Angare, which was essentially to introduce another sort of writing, one that was filled with graphic word pictures of a sick, alien society. It was a self-conscious attempt to shock people out of their inertia, to show them how hypocrisy and sexual oppression had so crept into everyday life that it was accepted with blind disregard for all norms of civilized society. This sort of writing, if allowed to grow unchecked, would become subversive, and that would not suit either the religious or the political powers that be. It suited the colonial administration, therefore, to thwart, suppress, and malign such writing by encouraging a religious color to swarm its real intent. Unlike the later work produced by the progressives, I studied the work of the progressives in detail in my book on the movement. Here, in Angare, there is no optimism, no attempt at providing solutions or even advocating change. Angare is a dark, driven documentary of disquiet. We see no attempt whatsoever at social reform, as we do, for instance, in the stories of Premchand. Premchand का नाम हम बार-बार लिखा है और प्रेमचंद का नाम लेना जरूरी है क्योंकि प्रेमचंद एक तरह के he's the founder, of course. He comes to give the inaugural address at the first progressive writers meeting. Those who clamored for banning such a book and those who capitulated
were not interested in the impulses that drove these four young people. One set merely saw an affront to their religious identity, the other was solely interested in buying peace. Only a handful saw and appreciated the intent behind the provocation. And anyway, thank you. आपने देखा जो आज हमने वक्तव्य सुने, किसी साहित्य को जब्त करने के पीछे कितने कारण थे, और आज जब हम सारे साहित्य को जो जहाँ भी रखे हुए हैं, वे चाहे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हो या अन्य जगहों पर, उनको स्मृति में लाते हुए ही एक गर्व का भाव आता है। महसूस होता है कि उन शब्दों में कितनी ताकत थी। मैं आप सबके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। बहुत ही अच्छे वक्तव्य यहाँ पर हमने सुने हैं, और हमें विश्वास है कि आपके वक्तव्यों से जो आगे के शोध के रास्ते बनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासराव जी से अनुरोध करता हूँ कि औपचारिक रूप से वे आप सभी आमंत्रित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। Before I say a word of thanks, I think Professor Azadi will say a few words. It has been a really fulfilling and very stimulating exercise for all of us. And in this discourse that we have today, we have come to know about things that are happening across different languages, areas, and also we come to realize, as I have said in my inaugural year, that the whole Indian people share these common values of in the struggle against British colonialism and imperialism, and therefore though the language were different, but the essence all across India was same. This realization definitely has today enriched me, and I hope it will also enrich all of us. And in this 75th anniversary of our freedom, I think it could have been no better subject than one that gives us the feeling that we are one, knitted together by common destiny and history. With these words, expressing all my heartfelt thanks to all the participants and our organizer, Raoji, for holding this beautiful year. And people, I have got two messages. Well, already it is, I think, in YouTube, or Facebook. So they have given me photographs from my state of us sitting and discussing, which was really nice, and it should be available. With these words, thanking you all again, I give back the mic to Raoji to formally conclude. Thank you. 1 second. I just wanted to say one more thing. I forgot it. There is one movie called Raithu Bidda. It was banned in few districts of Andhra Pradesh. It was produced in 1939. It ran for 15-20 days. Then afterwards, it was banned in 2 to 3 districts of Andhra Pradesh. By British government. The local British government, not properly. Thank you. It was very fruitful seminar, I should say. Rather, it could have been a seminar, not a symposium. After listening to all these wonderful papers from different languages, it needs a kind of national seminar on this subject. That is what I was thinking in the coming days, because anyway, next 1 year we are going to celebrate this Azadi Mahotsav.
So it will be appropriate to have in a bigger way national seminar, and the languages which were not representing right now, that also can be accommodated. We can accommodate those things. So without taking much of your time, I want to say thanks to all the wonderful paper presenters, Prabhujyoti Goraji and Harish Trivedi, who joined virtually, and Rashtra Trivedi ji from Gujarati, Ramjan Sharma ji, Raghavan Patel ji, Prabha Verma ji, and Chittaranjan Boy ji, Gurudev Singh Sindhu ji, Anand Kumar ji, Vasari Naveen ji, and Lakshmana Jaydev ji for taking time to take toll on this very holiday. But every year on the 15th we do this kind of symposiums, but every time we used to have a topic with freedom, what freedom means to me, what freedom in Indian literature, like this. But this time we thought it would be appropriate to have this kind of subject, but it will be very fruitful. So once again, thanks to all of you, and we have with us Sahitya, who came all the way from Assam, is also Akademi Award winner, and Mohan Imtani, a very eminent Sindhi writer and also advisory board member. And all the other dignitaries who are participating in this seminar. Thank you so much, and Subhratri. I request all of you to join at 8 we have arranged outside. Thank you. Awesome.